Hey bro, I almost forgot. First game is Delhi, Jiraya. Yes bro. Host कर दो and code दे दो. I will already check them. Code is 47. 1 second. रुको 1 second भाई. Jiraya बोलो code. मैं दे रहा हूँ उधर वेट. निकलेस Okay, को okay. मैं इनवाइट कर लूँगा. Who is the other captain? I have also invited him. Invited him. Tung Poco दे देता है तो फिर. हाँ मैं दे रहा हूँ भाई. 7, 1, 2, 8. You are in a different custom lobby, guys. Leave that one. प्रीतम भाई ऊपर शिफ्ट हो जाओ ना. मैं इधर से निकल जाता हूँ. इधर क्यों घुसा?
हेलो गाइस लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूँ इनटू एल्गैम्बो स्पोर्ट्स मोबा क्लास सीरीज, जो कि पावर किया गया है एल्गैम्बो स्पोर्ट्स के द्वारा। एंड एज वेल एज वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट गेम ऑफ द स्क्रीम, जो कि हो रहा है वेडनेसडे स्क्रीम मोबा का। अगर आप रजिस्टर नहीं किए हो मोबा के वेडनेसडे स्क्रीम पे, तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर दीजिए फॉर द फ्राइडे स्क्रीम्स। And I think, sorry, I'm with Asuya. I just literally forgot that I have to do English. So sorry, Asuya, for it. But right now, if you guys haven't registered your team for the scrims and you want to register and you want to play at Algambo Esports Mobile Class Series, then the Friday scrims registrations will be open soon in our website. So you can get the link of website in our YouTube chat, as well as in our Discord server, as well as in our Instagram handle. So follow us in our Instagram handle, join our Discord, like the stream, share the stream to your friends. Do not forget to comment down whom you're supporting and whom you want to see more in the scrims, as well as subscribe, guys, because your support, your love, everything matters a lot to us because you guys are the members of our family. And now Will of D going against team Gravenoise. Okay, that's a good name, Gravenoise. I first rated Gravenoise, but then I saw no, it's Gravenoise. Hello, Asuya, how are you? Hello, Ash. I'm good. I hope everyone else is also good. And just like you said, Gravenoise. I think they are members. I can see some similar members like Mari Biscuit. So I think it was Team Almost Pros before. So let's just see how this new lineup is gonna work out for them. And with this, we do have got Atlas, same Paquito, okay, Grok. After a long time, I'm seeing a Grok being banned I've away, been waiting for but too that long. opens a lot of options. There is a Zushin you can grab onto. There are there are a lot of options onto the EXP too. Although the meta, the jungle onto the tank is no longer meta because it's pretty slow. But they have already banned away the carry. So let's see what Team Will of T is planning because it's just because if carry gets some farm or maybe some space, she can just start melting anyone. So better just ban her away, I guess. Because obviously nowadays we are seeing a lot of meta mages literally rotating the whole game according to their fingers. So definitely banning out the god as well as picking up the Eve for the first pick will not be a surprise for me. But there you go. They're gonna go for the panda, and at the same time, the Suyu will get opted by Will of D. I was literally thinking that they will go for something with the Jushin or Eve kind of thing, but no, it's a Suyu and a Phobius. Some kind of insured pick for the Harith, but then you don't see a Harith often in the go lane nowadays. So there is a huge chance Team Gravenoise might gonna go for the Claude. And as the Lapu Lapu get prioritized against the Phobius, what do you think? How the matchup will be, the lane to lane, against this Phobius by this Lapu Lapu? They call me a Well, hero I think Lapu because I will saved my do good. nation from Same falling goes for apart. Phoebus, but then the real shine comes when it's about a team fight. And Lapu's pretty good. Same goes for Phoebus when it goes into diving into the backlines. So let's see how the trade-off goes between these two EXP laners. We might even see the first rotation coming towards the EXP because both of these are really strong in the early and taking away the EXP as the first pick off helps you near the turtle. So yep, right now they do have the vices. And nowadays we also see vices onto the gold lane, so I wouldn't really want to say Pain that he is is the onto proof the that I'm still jungle, but then alive. again, a guy after the nerf onto the jungle, he's definitely the roam, so there is a Crowned by possibility heaven's that it mandate, is my legacy shall vices onto the jungle. endure. Brody picked up so soon. The Will of D, will they ban out the Cloud? What do you think, Ash? I think so. They might gonna go for that Claude ban here, but not sure about it though, because somehow you see against the Brody, the Claude kind of not work properly. The Brody get the proper shots and all, even the Sky Piercer stack. So I believe rather than banning a goal laner, you should ban out those mid lanes because the Eve or something or the artillery kind of thing gonna Magic is make my sure that the life. Brody will not get much farm and he will get shot a lot of times by the burst. So yeah, Butterflies might gonna. born Oh by no, thy the Harith wish, ban, but I don't know why they guided went for the by Harith ban because lantern's light. they does have a Phobius into their you know lineup. They should have banned something else like the Eve, but it's fine. Now the Zetian ban, Harith ban, the picks is about to come on
from the Will of D. They are yet to pick their mid laner. Might be focusing on that Eve pick for them. If not the Eve, then gonna go for the Belleric Roam. What do you think? Belric Rome is good, but as for now, there's not much of a dive in. Something which will completely commit themselves into the backlines. So I don't really think there is a need for a Belric right now. Kaja, of course, a great option just to pick off someone. Even the guy can't really do anything about it. So, but then again, I'm really surprised that they picked the Brody so soon. They could have gone for the Zushin, I guess, but as for now, we do see EXP with a 4K Mincetar. I think if it's a room or is it an EXP, what is this exactly? Is it a gold lane Mincy? I think it is a gold lane Mincy, and Vice is onto the jungle. Yeah, it's a goal lane Mincy, or maybe a EXP Mincy with goal lane Lapu Lapu. Both vice versa can work for the Sata team Gravenoise. Because I talked to some players who are playing regular scrims at Algambo Esports, and I just asked them why you guys pick sometimes like those off meta picks for yourself. They told me they want to try because it's a scrim, so of course they want to try something new, which is into the meta or something into their pocket pick. So yeah, trying is a better thing here. Because into the main tournament scene, like when Algambo Esports will go for their next tournament after Battle for Crown, they will definitely show their proper potential kind of thing here. But Kadita coming in here with the Kaza is not so spectacular from the setup team Will of D, because Kaja, I believe with the Kaja you should go for something not initial or instant burst kind of mage, but actually something into the layered burst kind of thing like Lilia or Lunox. It's fine. They're gonna go for the comfort, and here we are for the first game of the scrim between Team Gravenoise versus Will of D at Algambo Esports weekly scrim clash. There you go, guys. Asuya, who will take the first blood? Any guess? I think it will be Team Will of D, simply because they are very strong early and they have a lot of pickups. They have a Kaja. Kaja can shut down the Vices when they are competing for the turtle, or they can shut down the EXP, the Lapu too, so they do have that option. And meanwhile, Karita, of course, she just needs that level 4. She will be deleting someone off the face of the map. Meanwhile, Valir is also strong, but then again, I still think the more of the power of the early lies in the hands of Team Will of D. Let's see how they execute it. Moreover, it's easier to pick the Valir than pick a Karita, because half of the time she's just immune. She has a lot of mobility. Meanwhile, into the goal lane, we do have the Mincy going up against Brody. I think Brody might face some issues, even towards the late game, even towards the early, because it is a Brody after all. Because one flicker ult and Brody can literally, be shut down completely. But we do see some pokes happening here and there. It is a Kaja though, he will be healing up pretty easily with the first kill. So pretty safe, and everything pretty safe for now. Jungler is just farming up. Both Suya as well as the Vice is pretty strong, pretty fast clears. So everything is pretty okay. It's just that the Brody will be facing some issues, as we can already see the hook onto the Brody. He might need to flicker away from there, but no, just one dash away. But we do have a gang coming up. Just a poke though, just a fluke from the side. But now the first blood secured here, and they're gonna go for the initiation as well. But that's a beauty from the initiation. 1-for-1 the score is. The XP laner, goal laner for the jungler. And it's a big trade for the side of Team Gravenoise, because they will contest the turtle freely, but at the same time, the resurrection time will be on for that Suyu, so he'll be back at the perfect timing. So I don't know. He might gonna go for the contest, but at the same time, look at it. The Suyu is having a little bit, problem in the early phase of the game because of this Akai's continuous poke, and you can see the crowd control as well. So zoning him out will be actually easy for him, and he might gonna go for the heavy spin as well, but he don't have it right now. It's not the cooldown. Retribution on Neols. He's gonna get the turtle. Gonna go for the again. Research comes in the way, but Neols falls down. Min Meng well, getting the kill there. Really sad, but Lapu just trades it off. And I think even Fovis did an amazing job zoning away the Vices, but then it is a Vices, he has a dash. And I think Suyo, even though he played pretty well, he should have saved that dash for a bit late, because he managed to grab the turtle, but then he used the dash way too early. But here, King's calling, and Brody might be able to pass.
Once done, manages to move away. How did he dash? This is basic attack considered a dash. Can he move? Definitely. What a game coming in, and that's a heavy spin. They're pinning him to the wall, but getting the turret damage as well, and the shots come in as well. Shots onto the front, and the Akai will just get taken out here. What a start for Will of D as well. Like, they got the turtle, they eventually falling down, trading off and on for against Gravenoise, but at the same time, they're doing great with the lane-to-lane matchup now. Hook comes in, Flicker into the way, goes back into the safer zone. He's getting taunted, he's getting haunted, as well as he's getting ganged by the side of Team Gravenoise every time. Recalled back into the base safely, but now the Ghouls shield will be taken out from the side of Team Gravenoise. That's a Flicker with the suppression, Divine Judgment, but what? My goodness, King's Calling comes in, but somehow Kaja will find his way back. He goes inside the King's Calling with that Soul Saver, but somehow he'll be safe with the Evil Pillar being used as well. I mean, that's the thing with the Suyu, Asuya. Like, you know, there is a thing like you have lesser cooldown onto your skills, so definitely you're going to use it as soon as possible, and that's what the Suyu is doing. He's taunting, he's coming back, playing Frontier. Nice. Yeah, definitely, but that save coming from the Minsitar was pretty good. It kind of cancelled that ultimate from Kaja. Well, I didn't know that was possible, but that just happened. But then again, he couldn't properly hook him up because it was the ultimate after all. And with this, Karita, she is a great mage, but unfortunately, the way the Akai is tracing her throughout the map, she's not getting a chance to, camp onto anyone. So she heavily needs to rely on Kaja or Mobalegends to get some tank over there, but the heavy spin. But the heavy spin once again comes in. They're gonna go for the pin into the wall, but then you're gonna see the follow-up a little bit late from the side of Team Will of D here. But at the same time, Tormentation coming in. Kaja in a very bad position will be taken out by 6TZ here. What's a waste? Guys play so well here with that Ishin Shin. I told you, like, he's literally playing like the... Oh, that's the beauty! I mean, Akai went in with a flicker, finds the kill, placers do come up, but it's a beautiful strategy coming out from the side of Team Gravenoise, taking out 2 kills with a turtle into the back end. Definitely, taking all the trades into their hand. Retribution, got the blue buff, goes back, but another engage comes in, he goes for the fork, Soul Saber comes in, Blade Surge as well, but it will be a kill. On the Kaja, Rock Whips comes in as well, and the Panda falls down, but with that, it will be Mai going down as well. Split of HP, goes back, that's a Mono Shocker release as well, but oh my goodness, 1 for 1, 2 for 1, and then you see 3 for 2. I mean, every time they're going for the Rumble, they're going for the Brawl, it's ending up with both the teams getting some +1 or +3 into their trades. I would say the Lapu is providing more to the team than the Mauryas, because just look at him, the way he's rotating. Always there alongside the melee, but I don't think so. Oh, he manages to grab onto that kill, but then once again, 2 jumps again, suppression comes in and manages to move away a bit, but then again, a kill. I would say a pretty good trade coming up out there. 2 kills finally for the side of Team Will of D, getting some of the trade backs, getting some of the kills, some of the gold back. But this is the next objective will be coming up pretty soon. But once again, I think kind of a base. Gonna go for the initiation again. Kaja goes back with the passive on. Mono Shocker release. Gonna go for the Soul Saver from the Suyu, but he falls into the trap, into the King's Calling, and now he's getting all those damages into the nick of health. He managed to slip her back. Safer position, but now there is a chance to go for this body. Flicker comes in, he goes back as well. Definitely, they're getting a lot of trouble during the team fights due to those crowd control coming out from the side of Team Gravenoise here. British Fighter gonna go for the initiation. We're gonna see the Lilia going back here. Not the Lilia, sorry. But look at the Karita though. Now, you know what I thought, like those Kaja's glowing balls, I just remember Lilia, I don't know why, but now Flicker with Akai's heavy spin coming in soon, and Brody is trying to poke it up. That's the 3rd turtle. What do you think, Asuya? This will be Team Will of D, or are they gonna like retreat with the turtle? On a Shocker release, that's the kill on Kuma TZ, and they're gonna go for the fight again, but Brody, before he gonna go for the shot, he falls down immediately, double kill secured. Guys, TZ falls down, Suyu going in for the initiation. He might gonna go for a triple, and he gonna concede the triple as well. 1 to 2,
2 to 3, and now can it be a mania? Can he become an S for his team? No, retaliating back, dismantling from the fight, gonna go for the Lord. It's a good strategy because you don't want to force out the fight, continuing it to like nothing less, trading off some kills to them. Good decision. It was an easy contest for the Lord, I would say. Brody was way too ahead. I think he got a bit too greedy over there for the kill on the viruses, but then he really needs to be safe because there's also an Akai, and of course, if you do see our Vincitar, he's making sure to grab on. Like all of his hooks are going for the Brody, he's waiting it out. Now this Phobos also needs to be safe because Vincitar is kind of perfect counter for the Phobos. He really can't even move, can't even jump, but the suppression comes in and Vali gets taken down. One easy exchange. Will they go in for more? Because I do see the Kaja with some pokes. They're trying to, just force out the first tier from the mid lane, but the Lord is marching down for them. They really need to clear out the Lord. And with this, the Karita, though, I haven't really seen her give any sets or take out any pickups because Karita specializes in that, right? But then, yeah, I would say pretty easy defend for the Lord. It is the first Lord of the game after all. They do have the YSS, but then the lane sake, they managed to grab the first tier from the board, opening up the map to themselves. Some macro control back again into the hands of Team Will of D for now. Both teams do seem to be equal. I would say Suyo is performing finally well, but no! Okay, King's Calling once again comes in. That is the beautiful strategy being behind it. You also can't do much. Redemption for the Valir. Shutting down Mary Biscuit. Shutting down the Newells being there. It was actually a beautiful opening for the setup team. Gravenoise wanna go for another initiation, but this time he doesn't have the King's Calling. He is getting cornered, he's getting tampered, and this will become not easy. Going down, final blow by the Kadita. British Fighter comes in there, initiating the fight, they're converting into some trades. Infernal Pursuit, fourth shot, and it will be a little bit dismantled from the setup team Will of the Year. Okay. I mean, they know, if they continue the fight, they will be in the backline phase because the team members were in lesser health, but itemization, Asuya? Pretty, normal. And I do say Kaja with other Thunderbelt works. And Valir has just gone in for the Slow Queen as his third item. I would say pretty okay optimization from both the sides. The anti-heals are also on point. And the Lapu Lapu, of course, might go in for... They're also going for dominance next. But it do make sense because there is a Suyo, and there is also a Brody. But then Brody also going in for the magic defense, the golden... the magic defense out there. And with this, some folks coming up once again, Kaja with the suppression gets hooked. Yeah, they're gonna go for the hook again, and that's a quite heavy spin comes into the way as well. British Spider used, and that's the kill onto the Kaja. Somehow Will of D is trying to go for the sets, but then you see the comeback from Gravenoise as well. Let's see who will have this Lord, because it will be the most important Lord, most important macro objective for both these sides to contest it down there. Well, definitely, and I can see, some synergy issues coming from the draft from the other team Will of D, because if you do see Team Gravenoise, they have kind of, Akai as well as the Vincitar to give a lot of crowd control, a lot of setups. Meanwhile, Will of D being more of those, I would say, they are kind of separated, kind of draft, but we do have the contest of the Lord. They're gonna go for the contest out of the Lord. Let's see who will be having it. Retribution Smite 50-50. Rough waves being used. Nobody got into the casualties with Kuba Cheesy. Surprise down there. Lord at the head of Mule. They're gonna go for the slay out of the Sekai's Cheesy as well. 2-man down with the Lord into the hand. Okay, that's a beautiful rumble. He got knock on double. My god, with the Soul Saver. And now Evil Quiller being used one by one. Got out from the pit. This is the Lapu Lapu getting cornered. Minions waves are not so heavy here. That's why they will, wait for the perfect chance. But I don't know why Lapu Lapu is waiting for. Like, he should go back here. He should go to the base. He should try to defend it up. And now, Team Will of D, they're gonna try to take out some structures for them. Let's see, Kaja trying to zone it out properly into the red buff. At the same time, the Lord marching on the top. Nobody is taking it down. Second tier falling down from the mid. Well, I think at least one inhibitor they can take down. The lane sync is also kind of okay. And with this, we do have some pokes coming in. Will of D making a comeback.
I think it is also the late game, so I think Minzatar really needs to focus on to the Brody. I don't know if Brody has gone in for the wind, but he really needs that because one ambush can actually take him down pretty easily. Now, just you can already see that how the range which is onto the Brody is giving more, providing a bit more to the side of Team Velocity for now. And Kajato getting picked off because I do see him getting hooked a lot. Along with that, heavy spin also being wasted on him. I would say it's a waste because at the end of the day, he is the roam, right? Okay, flicker. Natalia? Are the kings calling? Yes, from Natalia. A big waste. I think he was planning to hook someone, but that was way too far away. Maybe the air. I don't know, but it's fine. It happens. But you need to make it sure that cooldown will not hamper your team fights again, because somehow it is really a big state. You're just gamble it up because there is a lot of mobilities into the side of Team Will of D. If you see, it's a Phobius, it's a Suyu, so definitely they're going to have fun when the King's Calling will be into the cooldown phase. But taking out two lords one by one, even though having a lot of kill traits into the hand of Gravenoise, I believe Will of D is actually playing so disciplinary into the macro scene. And if they continues to do it, they might gonna take on against Gravenoise. Gravenoise trying to clear it down there. They do have a Valir. I mean, this is the thing, like you have a clearance kind of thing into your lineup. That's why you're clearing up as soon as possible. But at the same time, you need to pay the price with the amount of penetration coming out from the side of Team Will of D. Rough whips used. Nobody got into the hand. As Asuya mentioned from the very beginning, that even though you're using the Kadita, you're not trying to give a set, to give a pick off. And that's what happening a lot to the side of Team Gravenoise. Sorry, Will of D. And they just the blue getting stolen away into the hands of the Kadita once again, but a lot of folks coming in the guy. But did he jump in? But the Lap also follows up. A stun, connecting up onto Menace once again gets taken down out there. Rough whips used as well. That's a blade surge coming in. King's calling into the fall as well, and that will be a kill onto mine. But in the mind, he's gonna falls down and double onto Mary Biscuit. Slither of HP, gonna try on the 4-member triple secured. He's gonna go for the Maniac. The S is here, and that will be Neol with the Maniac. My goodness, slaughtering, butcher each and every member of Gravenoise, and now they can finish it up. But they want to go for the Lord first. That's the way you should finish it up. Like a king way. No need to go and push it up like in desperation. Let's go with the Lord. Let's go with the flow and finish it up with the style. Yeah, they will be coming back pretty soon. And Team Will of D, I think they should sync the lanes for now because the Lord will be taking some time before he joins up too. But this pretty good team fight, Maniac for the Suyo. And at this point towards the late game, nothing to really stop the Phobius, because if you do see, Phobius is providing a lot of utility for the side of Team Gravenoise. I think finally we do have both the EXPs doing a great job. The Kaja too. But then I think, even though one King's Calling from the Mincy can literally disable more than half of except the Kadita, all of the teammates, even the Suyo, will be literally disabled, and yet we don't really see any King's Calling onto the Suyo, King's Calling onto the Phobius, because at this point I would say this Phobius as well as the Suyo combo is working out really well for them, because Phobius dives in, very tanky, Suyo follows up, and the rest of the team, they can just find the opportunity behind the scene. So I would say Menzatar really needs to lock down the Phobius as well as the Suyo instead of going for Menace at this point, because even though he has the damage, but I do see the Brody is getting caught off pretty easily. Definitely, and now the game's they could have ended it though, but they couldn't manage to sync it up properly into the Lord side. And now they give another chance to Team Gravenoise to actually come back into the... Oh, gonna go for the hook, but again, the King's Calling is getting missed by the Mincy. Kumar TZ. He needs to, wait for the perfect initiation, then all he can go for it. Like, you do know there's a huge cooldown onto it. Rafael, beautiful this time. Go to the big point. Gonna get Kumar TZ down. Sika TZ falls down as well. Infinite Pursuit coming in. They're gonna go for the blow. Godlike onto the Panda.
One after one is getting slaughtered here. It's just the Valiant and the Lapu being saved up at this moment. All those minion waves coming into the mid. They're going to target it out into the mid inhibitor. Look at it, the shots coming in, but somehow the lane clearance is so high for the side of team Gravenoise. They're going to clear it out somehow. But at the same time, Mathuya, into the Lord, do you feel like they're going to contest it out? Because at this moment, if they go for it, they're going to gamble it up. Well, I don't really think so. They are in a situation because King's calling, even though Mincy did get some cooldown buff over there, but then I think it's the most necessary, the most vital point of their team at this point, right? Because they gave up on a marksman, they gave up on some range when they picked up the Mincetar out there, but the rough waves comes in. Mincetar once again getting caught off guard. I mean, Karita is the only one who can take him down pretty easily because she's literally the counter of a Mincetar. She can just move in and out from even the Al pretty easily. So, why don't you wait for the Akai? Why don't you wait for the Lapu to jump in first? Or maybe just wait for some, the Alts to get taken down. Maybe some baited away. I think the Mincetar, which is the most crucial point of this draft, is not being able to, provide anything for them. It's also towards the late game at this point, the 19-minute Lord being taken down. I think so Team Gravenoise is in any situation to contest, even the Vices is just clearing the board, so why are they going without their jungler? Got secured. Once again done here for the side of Team mlbb. They're gonna make sure that this time the lane will get perfectly synced with them so that they can finish it up at the perfect moment. But at the even though you said you talked about the Mincy thing, but I believe like other than Mincy, the Akai, which was giving a lot of sets in the early phase of the game, is not able to do it in the late. Like I don't know, is it the synergy or the calls from the IGL or from the shot calls from the mid laner? But it's really not getting synced into the fight properly. Like you mentioned it, he can bait out some ultimates. He can wait patiently for some time. But again, poorly synced with the mid lane getting cleared here. Top lane, the Lord marching in. It's a Infernal Lord this time. Not able to, if you don't able to defend it up, it will smash your base out. There you go, guys. Inhibitor falling down from the top. Lord, open up the. Oh, why? Again. Well, really sad, kind of wasted, very crucial resource wasted, but the flicker hook coming up. And Gada just uses up the ultimate to move away, and a lot of damage coming in even from the rough waves. But look at the Mountain Shaker, the Brody, grabbing those kills left and right. The Immortality being propped away, the Lord has been taken down. Will they be able to defend though? The Valiant is still standing, trying to clear it away. One hit from the base, and Dreadrock also gets taken down. A double kill for the Valiant out there. Nicole also gets shut down, but the Brody getting chased up, a triple for the Valiant. And with this, we do have only the Karita with the focus remaining. Even though all three inhibitors down, they still manage to defend somehow. Definitely. They're defending it up at this moment and they're doing so well for the time being. But this is what Will of D is off right now. Like, they couldn't manage to finish it up, even though they're trying to do so, but they're going a little bit, inside the mark and they're falling down immediately. But now Kadita is getting a little bit of poke onto her. She goes back into the safer side. You will be stolen. Well then, of course, one grave mistake and Team Gravenoise gets a comeback. But look at the shred which comes in from the Valir. I would say, but after Valir grabs the lantern, his pokes become infinitely strong. They really, I would just like a god, they hurt a lot. And I'm really surprised that even though it is a Valir with just one flicker, which is also baited away, even though he has the Purify and yet so many, there's a Kaja, there's a Karita, and yet no one able to even mark down the Valir. That just shows how how well he's positioning, so that not really anyone is able to catch on to him. But then again, it's also that there is a second skill which just pushes everyone away. So I would say very, very annoying mage, but some lane clearing spokes happening. I'm really, really looking forward. Oh, this time is gonna work so well. Gonna go for the Brody to get finished as well. Oh my goodness, the previous fighter connected. Mobius goes down. Played happen onto Neos. Suddenly the wind shifted. Asuya, they're going all into the mid. And they might gonna succeed this time. It's just the Kadita. And there you go. If the Kaja can make it sure to defend this up, have a chance to go for the Lord again. Will of D
suddenly the game goes off from their hand. What do you think, Asuya? Will there be a comeback from Grave? I think it is possible because this is what I was talking about. You know, this is a synergy that Mincidar doesn't need to be the initiator. But Kaja grabs the Lord. Bro. Well, the game is going to extend a bit more. Team Gravenoise. I don't know what happened. I really don't know. The retribution was there, but really not on point. That somehow Kaja just manages to steal away the Lord. But yes, it is what it is. I think a bit of a breather for the side of Team Will of T, as the rest of the teammates will be making it back. And just like I said before, that was the kind of team fight you really wanted because Kaja had used his suppression onto the Akai. So Akai did bait out a lot of ultimates over there. And then one flicker and ult, 3 people disabled. This is what I was talking about. Ult onto the Suyo, ult onto the Phoebus, so that 2 of the most threatening people can be taken away from the map. And with this, it's a very clear, easy path for the rest of the teammates for the side of Team Gravenoise. But then losing the Lord at such a grave point, it's a very grave Gravenoise. Once again, he missed out the King's calling with the hook. Heavy spin comes in the way. This time also Neols finds his way back. He's getting a lot of strumble with the stun. He goes back. He does have a mortality into his hand. Blade Surge being used for a little bit of HP gain. But at the same time, this time the second waves of the minions, you have opened up the whole Nexus. Neols needs to go back. You don't have the Kaja onto the front. So definitely you can see there is a, you know, dismantle from them. They don't want to engage here. The game will go fast. But then with this, even though there is the Radiant Armor in the hands of Kaja, the melt coming in from the Willy will be way too much at this point. And I do see Sekis buying the potions again and again, and the Global Arts also coming along with the King's calling and the King. Here we have 2 that's easy deaths for them. The Rough Waves also comes in. 2 for 1 for now, I guess, and Laplap also dives into the backline with mortalities being procced up left and right. The flicker being used up once again, but the Laplapu can't really escape from the range of YSS. But with this, I think another grave mistake on the side of Team Will of D. Just look at this. Is this a comeback? I think it is because 3 members are down and the cooldowns are way too much. And just look at those 50 seconds cooldown onto the Suya for now. They have a Karita. Karita does not really have enough lane here at this point. But look at the Kaja just trying to poke away onto the Lapu Lapu. With this easy Lord for the side of Team Gravenoise, but they even have a YSS. A YSS has an immortality with Kaja coming in once again. I wonder if he's able to steal it once again. And we do see the heavy spin coming up. Okay, Ash is finally back with 3-man knock-up. And with this, we do... Gonna go for it. It will be the kill onto the Kaja. And at the same time, they're going to go for the Lord as well. Definitely Ishinchin with the retribution. This time, going to grab the Lord. But at the same moment, can you... say it, Asuya, they're gonna finish it up or they will be rendering it a little bit more forward because somehow we have been seeing a lot of Lords being taken on into this game. More than 5, you know that. So, definitely. Yeah, 26-minute Lord. Really hard, but they do have a Brody. Brody really needs to play safe because every time I see Brody, somehow he's playing like a tank. Like, he should be careful since there is a Mincidar, there's a Lapu Lapu, and yet I don't see his positioning that great. So, yep, really need to be careful. And with this Team Gravenoise finally making a comeback, pushing through all the sides, the Lord, I think pretty good lane sync coming up. But Karita all alone, trying to defend. The bravest fighter uses out the first kill, I don't think. So, Rough Waves coming up. She's able to go away, but then kind of a crucial waste of the ult. But at the same time, the Lord smash into the inhibitor. They find a big opening to the Nexus here. I'm gonna go for the finish, but at the same moment, we're gonna see the defense coming out as well. Brody trying to squish it up. He will manage to defend the Lord, but the momentum will get shifted. We're gonna see the heavy spin. Flicker comes in, faded on the way. Mobius goes on, double onto the Kadita. They're gonna go for a triple at this moment, and that will be a triple for Sekas Easy. Mike gonna go for the Maniac. He's gonna finish, and this will be the epic comeback we are waiting for. The tables turn on. Team Will of D will not going to win this game as Gravenoise managed to secure
the big comeback win here against them. Well, quite the match, I would say. Team Will of Tea, they had numerous, I would say numerous, more than enough chances. They could take down the base, they could take the victory, but somehow they just couldn't end it. I don't know what happened to them because I think that one mistake where one good King's Calling actually cleared the name, but then Kajal still saved it, right? He managed to steal the Lord, but then what can I say? Pretty surprising turnaround. And of course, once you have a Vices with its fully charged Sky Piercer, nothing can really stop him, right? But it is what it is. So we do have the victors for today, but for now, we will be just signing off. We do have a lot more scrim matches to come. So if you're watching us, thank you for watching. Do stay tuned, like, share, and subscribe. And we will be going in for a short break.
नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका मोबा वार्मअप क्लास सीरीज में। और आज के ये स्क्रीम्स होते हुए देखेंगे टीम्स के बीच में। इससे पहले के जो मैचेस गए यहाँ पे वो भी काफी तड़कते भड़कते शुरुआत वहां से होती हुई गई है और टीम्स जैसे जैसे इम्प्रूव कर रही है, देख के अच्छा लगता है जब भी टीम जो है जिनका मैच हमने पहले कास्ट किया हुआ होता है एंड देन आगे चल के वो टीम्स अच्छा करती हुई दिखती है, तो हमको भी खुशी होती है कि टीम्स ने इतनी इम्प्रूवमेंट वगैरह दिखाई है। तो उसी का आज इम्तिहान लेते हुए जो टीम से आपस में लड़ती हुई हमें दिखेंगी और कास्टिंग करने के लिए मैं आ चुका हूँ। मैं हूँ आपका कास्टर सिंड्रा, मेरे साथ कास्टिंग करने के लिए जुड़ेंगी पीची और जानते हैं उनसे भी क्या हाल चाल है उनके भी। तो पीची, क्या हाल चाल है आपके? हेलो शेंद्रा, हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी फिर सब लोग आज अच्छा बैठे हुए हैं एंड अभी तो शाम की बात भी है तो चाय लेके आए हैं एंड इसी के साथ चलिए मैच देखते हैं। क्यूई नेबुला वर्सेस वेलियंट गूल्स। वेलियंट गूल्स काफी बहुत अच्छी तरह से मुझे इम्प्रेस करके रखा है, तो मुझे यहाँ पर आज देखना है आज क्या नया लेके आएंगे। क्योंकि एक बात है कि स्क्रिम्स है, स्क्रिम्स के साथ तुम नया नहीं करते हो तो क्यू ही खेलते हो, तो इसी की बात पे मार्सेल कैरी आउट ऑफ द वे, क्यूई नेबुला भी थोड़ा जो अच्छे अच्छे हीरोज है। एंड चंद्रा थोड़ा बहुत लास्ट मैच देख रही थी, यहाँ पर सुयू का खतरनाक डोमिनेशन था, तो आज देखते हैं वही सेम आने वाला है न्यूज के साथ। क्यूई नेबुला फर्स्ट पिक। चलिए आज थोड़ा सा बोल सकते हैं ये कांटे की टक्कर होती हुई हमें दिखेगी। क्योंकि नुबिला बात करें काफी कुछ दिनों से यहाँ पे खेलती हुई दिख रही हैं और सामने यहाँ पे वेलियंट गूल्स हो रहेंगे। तो दोनों टीम की बात करी जाए तो यहाँ पे एक फेयर कंपैरिजन बनता हुआ दिखेगा आज कि किस तरीके से फाइट होती हुई दिखेगी। और देखिए पहला पिक यहाँ पे एटलस उठाया जाएगा, जानते कि सामने वेलियंट गूल्स के जो पिक्स है थोड़े से आप ये बोल सकते हैं कि थोड़े से लाइक ऐसे रहते हैं कि उनको पता है कि कौन से हीरोज जो है वो आते हुए हमें दिखते हैं। क्योंकि थोड़ा सा कंफर्ट की तरफ जो है वेलियंट गूल्स हमें ज्यादा जाती हुई दिखती है, बजाय इसकी कुछ नया मेटा या कुछ नई चीजें वो ट्राई करते हुए दिखे। और ये देखिए यहाँ पे लापू लापू का आगमन आता हुआ हमें दिखेगा। उसी के साथ साथ आज लैंस की एंट्री होती हुई हमें दिखेगी टीम वेलियंट गूल्स की तरफ से। और देखते हैं किस तरीके का प्रदर्शन आता हुआ दिखेगा। लैंसलॉट आपके जब तक 3 आइटम आते हैं ना तब आके आप बोल सकते हैं कि एक टीम में इम्पैक्ट लेके आते हैं। उससे पहले अर्ली गेम आपके लिए थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हार्ड रहता है, लेकिन आपका जो स्पाइक है बेसिकली वो 3 आइटम्स के बाद आता है। उन 3 आइटम्स में आपके वॉरेक्स होना चाहिए, आपके पास बोल सकते हैं यहाँ पे डैमेज रिडक्शन के लिए क्वीन विंग्स एंड उसके साथ हंटर स्ट्राइक अगर आप डैमेज की तरफ जाना चाहते हैं, या तो फिर आप ब्रेस्ट प्लेस ब्रूट फोर्स अगर वो बना लेते हैं तो आप सीसी से भी बोल सकते हैं कि इजिली बच के निकल जाएंगे। एस्केप स्किल बोल सकते हैं लैंसलॉट के पास हमेशा रहती है। बैकलेन को टारगेट करने के लिए एक बढ़िया हीरो यहाँ पे माना जाता है लैंस। जब मेटा पे थे एक बार को पीछी लैंसलॉट टैंक जब चलता था पहले तो लाइक इट वाज अनस्टॉपेबल भाई, उसको रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। लोग रोम पे लैंस खेल लेते थे उस समय क्योंकि टैंक एम्बलम पे इतना बढ़िया चलता था उस समय लैंस जब बफ था। लेकिन उनके ऊपर जब से नर्फ आया है तो कम दिखते हैं, कंडीशनल पिक्स रहते हैं, लेकिन अभी भी प्रभाव बोल सकते हैं कि गेम के बीच में लाते हुए दिख सकते हैं। डेफिनेटली, सो चलिए देखते हैं क्या होगा। वेलियंट गूल्स आई थिंक मैंने उन्हें देखा हुआ है कि लैंस काफी ज्यादा खेलते, तो लैंसलॉट लेते हुए चलिए आज कितना ऑब्जेक्टिव्स मिलता है वो देखते हैं। क्यूई नेबुला काफी स्ट्रांग लग रहा है, बट आई काइंड ऑफ वांटेड ए क्राउड कंट्रोल मिड लेन पे। क्रूशन काफी अच्छा क्राउड कंट्रोल देती है, बट एटलस के साथ उतना अच्छा मुझे नहीं लगता है इन थ्योरी। बट चलिए वेलियंट गूल्स थोड़ा बहुत कॉपी कैट के साथ ताजा भी लेके आ चुके हैं। वन मैन सेटअप चाहिए उन्हें एंड टू काउंटर ए लैंसलॉट वाईएसएस। काफी टाइम हो चुका है वाईएसएस को देखिए, इवन लास्ट मैच में भी हमें देखने मिला, काफी अच्छा लगा। एक के बाद एक लाइन पे पार्ट क्यूई नेबुला का जो लाइनअप अभी दिख रहा है काफी तगड़ा। तो वेलियंट बुल्स क्या करेगी यहाँ पर? बिल्कुल देखने वाली बात होगी। एमएम की बात करें तो वो रिथिल के साथ जाना चाहेंगे। अभी रिथिल की बात करें कि आप टीम फाइट जब फिनिश होगी तब आपको आना पड़ेगा, पहली बात ये। दूसरी बात ये आपको ड्रैगन से बहुत ज्यादा बच के रहना है। तो ओवरऑल देखा जाए पेपर के ऊपर तो क्यूबी नेबुला जो है उनका ड्राफ्ट काफी अच्छे तरीके से दिख रहा है, उनके पास वो स्लो डाउन है। और यहाँ पे अगर बात की जाए ना एटलीस्ट की जो पैसिव यहाँ पे उनका जो रहेगा आर्टिक कोल्ड, तो वो हेल्प करेगा कहीं ना कहीं यूजोंग को उनका जो ट्रिपल डैश कॉम्बो है वो कहीं ना कहीं मारने के लिए। और उस कॉम्बो के साथ ना यूजोंग इजिली सस्टेन करके निकल सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्यूई नेबुला उनके पास डैमेज है, उनके पास सस्टेन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने मेज वाली बात बोली कि जूशे ना यहाँ पे एटलस के साथ इतना ज्यादा कंपेटेबल नहीं रहते हैं,
बजाय इसके अगर वो एटलस के साथ ना कोई बर्स्ट मेज वगैरह जाते तो वहां पे उनको ज्यादा फायदा हो सकता था। अगर लुई वगैरह जाते तो मेरे ख्याल से वो स्थिति आपकी अच्छी बन सकती थी, और डाइवर्जन का भी इस्तेमाल करके ना बैक सीधा जो है दूसरी तरफ जाके मैप के ऊपर वहां पे आप इजीली जो है एक पॉइंट बना सकते हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जिस तरीके का गेम चलता हुआ दिखेगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऑन पेपर तो बहुत सारी चीजें रहती है पीछे, मेन रहता है आपका एग्जीक्यूशन। डेफिनेटली देखता है यहाँ पर एग्जीक्यूशन कैसे होगा। जी बिल्कुल, और इसी के साथ यहाँ पे देखिए वाइसेस जंगल क्लियर करते हुए दिखेंगे। उनके पास वो बोल सकते हैं कि फार्मिंग स्पीड रहेगी, जिसके कारण वो थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे लेन क्लियर कर पाएंगे। काजा आए जरूर थे, कोशिश करना चाहते थे वो बर्फ चुराने की, परंतु सफलता नहीं मिलेगी उनको। और यहाँ पे लीथो वो ले जाते हुए देखेंगे लैंसलॉट यानी कि क्योशी वहां पे खेलते हुए, और एरिथिल थोड़ा सा यहाँ पे परेशान करती हुई दिखेंगी। जरूर पीछे हटना पड़ेगा, बीएमआई का इस्तेमाल करेंगे। क्लॉड बहुत ही खूबसूरत तरीके से डैमेज देते हुए एक एचपी में बचे हैं यहाँ पे एमएम, लेकिन फ्लिकर यहाँ पे आएगा और उसी के साथ फर्स्ट ब्लड टॉफी उनके हिस्से में जाता हुआ। ताराशाही होंगे O2 गॉड कुक्ड, जैसा नाम वैसा काम यहाँ पे करते हुए O2 आज कुक हो गए हैं, पहला ही खेल अपने प्रतिद्वंदी को यहाँ पे देते हुए। कोई बात नहीं, यहाँ पर टीम रिकवर करने के लिए मिड लेन पे भी काफी यहाँ पर एक अच्छा सा प्रेशर दे रही है, बट ये प्रेशर बॉटम लेन पे कैसे जाती है देखते हैं। वापस से यहाँ पर लापू बहुत बैक ऑफ हो चुके हैं, एटलस भी आ चुके हैं। क्या यहाँ पर और एक खून देखने मिलेगा या नहीं? ओह माय गुडनेस, काजा वहां पे आएंगे जरूर, और उसी के साथ साथ ना अब थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आती हुई दिख रही है। वो ओपनिंग यहाँ पे क्यों ही नेबुला उनकी तरफ से एक शानदार ओपनिंग मैं कहूंगा। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कमाल का उन्होंने जो है वो एक बांधा हुआ है संगम, और ये देखिए टर्टल भी मिलेगा। क्योशी को पता है अंदर जाना अभी फायदेमंद नहीं रहेगा, इसलिए पीछे आए हैं। लापू उनका वो सपोर्ट आता हुआ दिखेगा, थोड़ी कोशिश रहेगी। अभी बात करें रोमर के तौर पर भी काजा भी अभी पीछे ही है, जब तक वो लेवल 4 नहीं होंगे तब तक उनकी तरफ से वो इम्पैक्ट नहीं आता हुआ देखेगा। लेकिन इस समय इम्पैक्ट वो मिड लेन की तरफ से कमाल का आता हुआ लगातार डैश यहाँ पे देती हुई दिखेंगी। और देखिए यहाँ पे एटलस का अल्टीमेट चुराया जरूर जाएगा, लेकिन बॉटल लेन पे सेलेस्टियल टाइटल्स उनको दिया जाएगा मिड टू डंट, और उसी के साथ एक अच्छा खासा रोटेशन टॉप लेन की तरफ। लेकिन बीएमआई का इस्तेमाल करते हुए क्लॉड वो बचते हुए निकलेंगे, वापसी इस्तेमाल करेंगे। अल्टीमेट का इस्तेमाल किया, यहाँ पे गलती हो सकती है, सेट लगाया जाएगा फेट इंग्लिश का इस्तेमाल, और ये देखिए वापसी की तरफ लगता हुआ बचते हुए निकलेंगे उधर की साइड से। लेकिन एमएम अभी भी डैमेज देती हुई दिखेंगी। डिवाइन जजमेंट आएगा जरूर, लैंसलॉट आ चुके हैं, वो किल और फिनिश करने के लिए फैंटम एग्जीक्यूशन लगेगा, और उसी के साथ ऑन रोजेस डबल किल में आएंगे यहाँ पे क्योशी। और बढ़िया वो साझेदारी, वो फाइट ओवर एक्सटेंड करी, जिसके कारण 2 किल आप दे बैठे, बच चुके थे आप, निकल जाते इजिली। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हुई, जिसका मौके का फायदा यहाँ पे वैलेंट घूल्स वो उठाती हुई, और 3-3 का स्कोर लाइन यहाँ पे होता हुआ जाएगा। अभी जो टीम्स हैं थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इधर खेलती हुई दिखेंगी, और यहाँ पे आएंगे एटलस थोड़ा सा वो विजन प्रोवाइड कर दिया है। वाइसेस ऑलरेडी मौजूदा है। लैंसलॉट की बात करें वो फार्म कर रहे हैं इस समय, फार्म की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, वो गैप देने की आवश्यकता आपको बहुत ज्यादा रहने वाली है। बीएमआई का इस्तेमाल करते हुए क्लॉड पीछे गए हैं, वहां लिया था कि वो रोटेशन वहां पे आएगा। इस समय देखना टीम किस तरीके से परफॉर्म करती हुई दिखेगी। बात करें ड्रैगन बहुत ही चालाकी से वो लीन कट कर रहे हैं, जिसके कारण ना वो इजीली लापू से सामने हेड टू हेड नहीं लड़ रहे हैं, और उनको एक फ्री हैंड मिल रहा है, जिसके कारण वो रोटेशन दे पा रहे हैं मिड लेन की तरफ। अभी टॉप की तरफ यहाँ पे रोटेशन आता हुआ दिखेगा, क्योंकि टर्टल का आगमन हो चुका है, और ये टर्टल लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ ये फाइट यहाँ पे छुट्टी हुई देखिए, तो उन्होंने जिसका इस्तेमाल किया है, पीछे हटे यहाँ पे लैंसलॉट, उनके ऊपर प्रहार, और ड्रैगन की तरफ से अच्छा मार किया जाएगा, उनको बचना पड़ेगा। लैंसलॉट पीछे हटे, रिकॉल का इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे, ब्लैक ड्रैगन फॉर्म इस्तेमाल करते हुए निकले हैं ड्रैगन। अच्छा खासा जोन आउट कहूंगा मैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से अंदर की तरफ जाएंगे, वो कोशिश उनकी तरफ से आती हुई दिखेगी। लेकिन मेज वहां पे मौजूदा है, तो रोजेस का इस्तेमाल, लैंसलॉट मौजूदा थे, एक और किल मिलेगा। उसी के साथ सेलेस्टियल जो आएंगे पीछे से, बैकलीन को टारगेट करना चाहते थे, और डैमेज दिया है यहाँ पे, अभी पीछे हटे। तो ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे दोनों ही टीम
बढ़िया तरीके से खेल रही है, लेकिन वैलेंट गोल्स उनका हल्का सा एक पड़ा अभी थोड़ा सा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। टॉप लेन की तरफ बचेंगे जरूर, एमएम पीछे हटे हैं, अच्छा खासा डैमेज लगेगा। ब्लेजिंग डो का इस्तेमाल, फैंटम एग्जीक्यूशन, लेकिन मिस करेंगे यहाँ पे। थोन रोजेस का इस्तेमाल किया हुआ है और उसी के साथ वायसेस बहुत ही कम एचपी में बचे हैं, तो पीछे हटना पड़ेगा। रिटेलिएशन आता हुआ दिख सकता है, लेकिन उससे पहले फार्म की तरफ जाते हुए देखेंगे वायसेस। जैसे नया मेटा आ चुका है यहाँ पर, जंगलर्स अलग तरीके से रोटेशन दिखा रही है यहाँ पर। अर्ली गेम काफी मायने रखता है। अर्ली गेम काइंड ऑफ डिक्टेट्स कि तुम मिड गेम में क्या करने वाली हो, एंड मिड गेम पे जैसे जाएगा वो लेट गेम पे भी दिखने वाला है। तो यहाँ पर वेलियंट गोल्स डेफिनेटली वांट टू कीप इट अप, बट क्यूई नेबुला वो करने नहीं दे रहे। उनका एक काइंड ऑफ एन एडवांटेज है कि उनके पास ग्रुप क्राउड कंट्रोल है एटलस के हाथ पे, तो वो काफी अच्छा है। चलिए देखते हैं वेलियंट गोल्स यहाँ पर मिड लेन पे अंदर की तरफ जाती हुई दिखेंगे, लेकिन उससे पहले पीछे हट चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास किया जाएगा। अंदर की तरफ थोड़ा सा बचे हैं अभी वाइसेस वहां पे मौजूदा रहेंगे। अंदर की तरफ जाएंगे, माउंटेन शॉकर का इस्तेमाल पोक किया है काफी अच्छी तरीके से, और यहाँ पे टैंक आते हुए वो विजन देने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय देखा जाए ओवरऑल टीम बहुत ही अच्छे तरीके से खेलती हुई दिख रही है आपस में, और बहुत अच्छा खासा रोटेशन उनकी तरफ से भी आ रहा है इस समय। क्यों नेबुला थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी स्ट्रक्चर नहीं दिया। ये अच्छी बात है, आप फाइट जितनी भी ले रहे हैं उस पर एक भी स्ट्रक्चर अभी तक नहीं आया है। डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पर 5-6 मिनट से हमें देखने मिलेगा कि स्ट्रक्चर्स को निकाला गया रहेगा। मोस्टली वेलियंट गोल्स के हाथ से पहले आने वाला है, क्योंकि उनका रोटेशन ये देखिए बैक लेन तक पूरा जाना चाहते हैं। यूजोंग आएंगे अंदर की तरफ, मार कर चुके हैं और ये फेटल लिंक्स लगेगा जरूर अंदर की तरफ। फिर दोबारा से O2 गॉड को और उसी के साथ कियोशी डबल किल ट्रिपल किल मैनियक लेने का प्रयास करते हुए आएंगे जरूर। बिल्कुल, और मैनियक के साथ साथ सैवेज और लैंसलॉट आते हुए कियोशी इस समय कमाल का खेलते हुए वो सैवेज लिया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कमाल का गेम प्ले आता हुआ टीम वेलियंट गोल्स की तरफ से। और यहीं पे मैं बात कर रहा था, जो एडवांटेज की जरूरत थी इनको, वो एडवांटेज यहाँ पे मिला। मिड का टरेट, उसी के साथ जंगल जो है वो आपका एक्सपेंशन हो जाएगा, तो इन्वेड होने के चांसेस अब पूरे के पूरे पड़ गए हैं। अब यहाँ पे कुछ कर नहीं सकती टीम क्यूई नेबुला, उनको जो है थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, फार्म करना पड़ेगा एमएम को, तभी जाके वो पीछे बैकलेन को डैमेज दे पाएंगे। और सबसे पहले आपको मार करना पड़ेगा किसी भी तरीके से लैंसलॉट को, लेकिन लैंसलॉट को मार करने के लिए आप सामने से जाएंगे ना, वहां पे कहीं ना कहीं बात करें जो के हैं वो आपको रोकने के लिए तैयार है हमेशा, और यहाँ से एटलस के अल्टीमेट वो चुरा के हमेशा रेडी रहते हैं। देखिए अंदर की तरफ जाते हुए देखेंगे कमाल का यहाँ पे काजा खेलते हुए दिख रहे हैं इस बार, बहुत अच्छी तरीके से वो पोक दिखा रहे हैं और कहीं भी एम्बुश करने का चांस नहीं दे रहे, हर बुश वो चेक कर रहे हैं, और ये अच्छे रोमर की निशानी है। ये देखिए जाएंगे पीछे, फ्लिकर का इस्तेमाल किया है बचने का, लेकिन डिवाइन जजमेंट आएगा और जाने का मौका नहीं दिया गया। फैंटम एग्जीक्यूशन से खत्म करेंगे यहाँ पे, उसी के साथ सेलेस्टियल ट्वाइलाइट बचेंगे, पीछे हटे हैं इस समय। अब टीम को जो है रिकवर करने के लिए वो फार्म की जरूरत पड़ेगी। एमएम एक सहारा बन सकते थे आपका, और ये कहीं ना कहीं टीम वेलियंट गोल्स ने इसको सोचा और एग्जीक्यूट किया सीधा वहां पे एमएम को, और ये जरूरी था, क्योंकि अब उनका गोल्ड अगर ज्यादा रहेगा डॉफी का, तो कमबैक करने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ेंगे। ड्रैगन की बात करें, ड्रैगन के साथ थोड़ी सी दिक्कत आती हुई, वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन सामने लापू लापू हैं, लापू लापू इम्यून रहते हैं। अगर आप उनका मार्क भी लगा देते हैं ना, तो कई बार वो अपने अल्टीमेट में बचते हुए निकल जाते हैं। या तो आपको एमएम को मार्क करना पड़ेगा, या तो आपको वैलेंटीना को मार्क करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत है क्योंकि सीसी इतना ज्यादा है यहाँ पे। और ये देखिए लॉर्ड मिलता हुआ दिखेगा, जोशी की तरफ वो लॉर्ड मिल चुका है। टीम वेलियंट गोल्स इस समय कमाल का गेम प्ले खेलती हुई, और उसी के साथ नेबुला, उनको वापसी अगर करनी है तो एक अच्छे सेट की जरूरत पड़ने वाली है एटलस के साथ। एक अच्छा सेट, और ऊपर से लैंसलॉट को निकालेगा, लैंसलॉट को जो ऑलमोस्ट मेनियक वहां पे मिल चुका था, एंड उसके साथ इतना ज्यादा बूस्ट मिल चुका है उनका गोल्ड आइटम्स, एंड लैंसलॉट जैसे हीरो को इतना अच्छा बड़ा बूस्ट देने का यही हो जाता है कि यू हैव टू थिंक ट्वाइस। एक तो क्वीन नेबुला के ड्राफ्ट में कोई कमी नहीं है, उनके पास भी काफी अच्छा लगा, बट थोड़ा सा एक बात बोलूं तो
थोड़ा सा अलग-अलग सा खेल रहे हैं, जैसे टीम वेलियंट गूल्स खेल रही है, बहुत चिपक-चिपक के अपने टीममेट को एक-दूसरे को सपोर्ट करते हुए, वो काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली यहाँ पे ना प्लस पॉइंट क्या है, वेलियंट घोल्स वो जानती हैं कि उनके कौन से मेंबर स्ट्रॉन्ग्स हैं और उनका कहाँ प्लस पॉइंट है, और वो इसी बात का फायदा उठाते हैं। आप जब भी एक बार नोटिस करेंगे फाइट जिस तरीके से भी जाती है, इन दी एंड उनको पता है कि कियोशी आके अगर हमने इनके अल्टीमेट वगैरह वेस्ट करवा दिए तो कियोशी आके वहां पे किल ले लेंगे, और इसी तरीके से ना इसी कॉन्फिडेंस के साथ जो टीम है फिर वो आगे बढ़ती हुई जाती है। और वही हमें इस समय आता हुआ दिख रहा है। इस समय मिड लेन की तरफ जाते हुए देखेंगे, डैमेज आता हुआ दिखेगा एमा बंदा की तरफ, अच्छा खासा डैमेज आएगा, फिटिंग लेन से इस्तेमाल किया है लेकिन आपने पकड़ा सिर्फ फाइटर्स को है, ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं और यहाँ से बचते हुए निकलना पड़ेगा। दोनों चीज का इस्तेमाल किया है, लैंसलॉट की तरफ जाएंगे, पंचर का इस्तेमाल, फैंटम एग्जीक्यूशन से बाहर निकलेंगे और उसी के साथ एक और खेल जोड़ दीजिए लैंसलॉट की झोली में। वेलियंट गोल्स अब यहाँ पर इनहिबिटर्स पुश करना चाहती है। इनहिबिटर्स के साथ में भी क्रिस्टल भी लेने का चांसेस काफी ज्यादा है। गोल डिफरेंस के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर 6-2 के बारे में बात कर रहे हैं, O2 गॉट कुक्ड, यहाँ पर भी काफी अच्छी तरह से फार्म अप हो गए डिस्पाइट बीइंग किल्ड ऑफ वेरी अर्ली ऑन। उन्हें थोड़ा बहुत वहाँ पर प्रॉब्लम आया क्योंकि इरिथे वापस से अर्ली हीरो नहीं है यहाँ पर। ओके, बॉटम लेन पे अंदर की तरफ थोड़ा सा जरूरी है, यहाँ पे पुक किया है, फिर दोबारा से फिटर लिंक से उठा लिया है यहाँ पे नोवा, यानी कि के जो है वहां पे उन्होंने। और इस बार देखा जाए तो टीम काफी ज्यादा बोल सकते हैं कि आपकी कॉन्फिडेंस उनके अंदर झलकता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके की फाइट यहाँ पे ले रहे हैं वो, जिस तरीके की आप बोल सकते हैं कि कांक्षा रख रहे हैं, वो काबिल तारीफ। 4-11 का स्कोर हो चुका है, गेम जो है अब मिड लेन की तरफ आ चुका है, तो कहीं ना कहीं अब नजरें जो है वो एमएम की तरफ रहने वाली हैं। अब यहाँ पे अब बहुत ज्यादा कोशिश यही रहेगी कि टीनेटी फटाफट कंप्लीट हो। और देखिए टीनेटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे क्लॉट, अभी फार्म में बहुत कम पीछे है। लैंसलॉट जैसे कि आप बोल रहे थे कि पूरे फार्म हो चुके हैं, उनके ऑलमोस्ट पूरे आइटम बन चुके हैं, लास्ट का आइटम बनना बाकी है और फ्यूरी हमें रखा हुआ है उन्होंने, जस्ट वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जी चलिए, उसको भी हटा दिया है अभी, और अब जाएंगे यहाँ पे मेलेफिक रॉर के साथ। मेलेफिक रॉर के साथ जाएंगे तो उनका जो बोल सकते हैं कि यहाँ पे पेनिट्रेशन वो और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा टाइम्स की तरफ। वो डिफेंस अगर जो बनाया है उसको भी मेल्ट डाउन करते हुए दिखेंगे यहाँ पे लैंसलॉट, और आराम से यहाँ पे ये लॉर्ड को लिया जाएगा। और वहां पे हुए बात की जाए लापू लापू, वो भी काफी अच्छे तरीके से विजन प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी ड्रैगन छुपे हुए हैं, यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है, के ऊपर प्रहार कर सकते हैं लेकिन नहीं, वेट किया है, अभी पीछे हटे, जल्दबाजी नहीं करना चाहते। और में जाते हुए देखेंगे, पीछे हटना पड़ेगा, आपको बच के निकलना पड़ेगा, दिक्कत हो सकती है लेकिन उसी के साथ फिनिश ऑफ किया जाएगा यहाँ पे वायसस। ओहो आए, बहुत हालत खराब हो चुकी है इस समय। विनेंस मिनियन चारों तरफ से आ रहे हैं इस समय। लेन जो है आप बोल सकते हैं कि मिड और शॉर्ट की जो लेन है, बॉटम लेन, वो थोड़ी सी सिंक होती हुई दिख रही है। और स्लॉट के साथ वो बॉटम का इन्वेटेड टरेट वो भी टूटता हुआ दिखेगा, एचपी नहीं है उनके वहां पे, और किसी तरह रोकने का प्रयास करते हुए जा रहे हैं लेकिन उनको पीछे खदेड़ा जाएगा। और देखिए टॉप लेन से लैंसलॉट आ चुके हैं उनके साथ, तो यहाँ पे और ज्यादा दिक्कतें आपकी बढ़ेगी। कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से बचाव करने की, लेकिन कितनी देर तक करेंगे। लॉर्ड आ चुका है ऑलरेडी बेस की तरफ, और अभी यहाँ पे वेलियंट गोल्स उनको भी पता लग चुका है कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको 2 इनवेटेड टरेट मिल चुके हैं ऑलरेडी। मिड का जो है यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हुए आएंगे और इन 9 मिनट्स के साथ ये मिड लेने का भी प्रयास करेंगे। अब लैंसलॉट के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी क्योंकि मिनियंस स्पॉन होंगे और उसी का इस्तेमाल करते हुए एक तरफ जाएंगे, फैंटम एग्जीक्यूशन का इस्तेमाल मौजूद शॉकर इस्तेमाल करेंगे लेकिन आराम से बचते हुए निकले अभी। और एटलस कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर यही होती है एटलस के साथ कि एस्केप स्किल इतना ज्यादा होता है नहीं, इसके वो इजीली बच के निकल जाते हैं। और यहाँ पे सब ऑलमोस्ट सबके पास डैश है, ऑलमोस्ट सब जो है यहाँ पे बोल सकते हैं आपकी एक तरीके से सीसी इम्यून है, जिसके कारण वो इतना आउटपुट यहाँ पे एटलस नहीं दे पा रहे। डेफिनेटली आई थिंक यहाँ पर वो मोबिलिटी की वजह से पूरी टीम बच पा रही है, प्लस जो सेट्स है वैलेंटीना से काफी अच्छा तरह से आ रही है, तो ये दिमाग में रख के टीम क्यूइंग नेबुला को यूजॉन को आगे भेजना चाहिए, ट्राइंग टू बेट इट आउट। अगर वो बेट कर लेते इजीली यहाँ पर कानिकी को एक अच्छा सेट मिलेगा, फ्लिकर भी अभी उनके पास मौजूद है, तो मतलब एक अच्छा सेट देने का चांसेस है। मैंने काफी ज्यादा मैचेस देखे हुए एटलस गिव्स 3 मैन या तो 2 मैन को ऐसे वो भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो सबसे ज्यादा फार्म हो चुके हैं, उनको अगर बराबर टाइम पे लिया जाता है, एज इन एक सेट मार दिया,
पूरी की पूरी गेम बदल जाती है। वैसे वाला सेट तो कानिकी के हाथ से आना देखना बाकी है, देखते हैं क्यों नेबुला कर पाती है नहीं। बट वेलियंट गोल्स के बारे में बात करें तो काफी अच्छा डोमिनेशन है, हर एक लेन क्लियर करके रखे। इतना अच्छा है कि डॉफी जो है अपने क्लॉड वो लेन क्लियर करते फार्म अप करना चाहते हैं, बट अभी उनका जो टाइम है थोड़ा शाइन करने का। बट वही दिक्कत है कि जब जैसे ही वो अल्ट मारते हैं तो पूरी पूरी टीम खुद पड़ जाती है एंड इतना ज्यादा डैमेज है कि वो बच के बाहर नहीं निकल पाए। अगर वो बच के बाहर नहीं निकलेंगे तो लेन क्लियर करने के लिए दिक्कत आएगी, लेन क्लियर नहीं करेंगे तो क्रिस्टल चले जाएगी। तो इतना सारा दिमाग में रख के टीम क्यों ही नेबुला क्या करेगी। अभी तो इनहिबिटर्स भी चली गई है एंड तीसरा लॉर्ड आ चुका है, तीसरा लॉर्ड भी वापस से कियोशी के हाथ पे इजीली जाएगा। बट अभी यहाँ पर शीला को कुछ तो करना पड़ेगा, एक क्लच दिखाई है बट आई मीन थोड़ा तो मुश्किल है अभी, जैसे टीम क्यूई ने नेबुला और वेलियंट गूल्स पोजीशन रख चुकी है। चलिए देखते हैं क्या होगा। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी वेलियंट गूल्स ने अभी, लाइक लॉर्ड लेने से पहले ना उन्होंने वो मिनियंस फ्रीज किए, फ्रीज करने के बाद उन्होंने सिर्फ स्लो पुश के लिए रखा ताकि टीम्स को जो है यहाँ पे क्यूई नेबुला उनको और भी फार्म ना मिले। और अगर वो लॉर्ड कंटेस्ट के लिए आते हैं ना तो वो मिनियंस का प्रेशर स्लो पुश इतना ज्यादा रह जाएगा कि वो ज्यादा देर रुक नहीं पाएंगे वो लॉर्ड की साइड पे, और उनको लेन क्लियर करने के लिए वापस जाना पड़ेगा। और ये अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है जब भी लॉर्ड आने वाला होता है। तो टीम्स ऑलरेडी जब भी लॉर्ड आता है तो उससे पहले ये स्ट्रेटेजी अपनाती है लेन फ्रीजिंग की, और वो यहाँ पे काबिले तारीफ तरीके से अपनाया गया है। अब देखिए जो लेन है वो ऑलरेडी सिंक हो चुकी है, टॉप से जो है लॉर्ड वो मार्च करते हुए दिखेंगे, मिड लेन से आपकी जो है मिनियंस वो आते हुए दिख रहे हैं। तो चांसेस आपके पास अब और ज्यादा कम रहेंगे। मिड का टैरेट ऑलरेडी यहाँ पे जाता हुआ दिखेगा, ये देखिए पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है, एमएम प्रार करती हुई दिखेंगी। और ये मिड का टैरेट गया, लैंसलॉट के पास वो मिनियन सही समय पे स्पॉन होंगे जिसके कारण वो अंदर डैश करते हुए जाएंगे। कोशिश रहेगी जरूर फैंटम का इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन उनको रोका जाएगा। अंदर की तरफ गए डैमेज देते हुए देखेंगे मैच के ऊपर, दोनों जिसका इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उनको अपना पंचर, जिसके कारण वो कूल डाउन पे होगा। दूसरी साइड पर भी मौजूद है, फेटन इसका इस्तेमाल किया है, अंदर की तरफ जाएंगे जरूर और उसी के साथ ओचू कुक करेंगे यासू और पीछे से आएंगे, एक के बदले एक किल, डबल किल मिलेगा जरूर। और बहुत ही कम एचपी पे कियोशी बचते हुए निकले, अभी भी काजा वहां पे मौजूद है, एक एचपी में बेस खड़ा है। और बोल सकते हैं यहाँ पे कि सांस पे अभी तो सांस नहीं आई होगी जब तक पूरे मिनियन किलर नहीं हो जाते हैं भाई। एक हिट चाहिए था, टीम विलियन रूल खेले बट नहीं। यहाँ पर काफी अच्छी तरह से यासो ने किल्स मारे। आई थिंक यहाँ पर उनका पहला किल और दूसरा किल एक के बाद एक आ चुका है। मिनियंस आने वाले हैं यहाँ पर, ट्रॉफी तो देख लेंगे कोई बात नहीं, बट इसी के साथ टीम्स क्या करने वाली है ये देखिए। गोल्ड के बारे में बात करें तो रेड टीम की जो है पूरी तरह से उनके हाथ पे है। इवन तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा लॉस मिला है उनके हाथ से, 3-4 जन मरने की वजह से, फिर भी यहाँ पर गोल्ड कैप क्लोज नहीं हुआ है। तो ये गोल्ड कैप थोड़ा सा ध्यान पे रखते हुए ऑलमोस्ट 8000 का गोल्ड कैप अभी बना हुआ है। क्यों ही नेबुला थोड़ा वापस फार्म अप कर तो रही है, बट दे नीड द लॉर्ड। यहाँ पर चौथा लॉर्ड काफी इम्पोर्टेंट होगा, और अगर यहाँ पर लॉर्ड नहीं लेते हैं तो काफी ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि लास्ट लॉर्ड के साथ ही उन्होंने इजीली क्रिस्टल पहुंच गया, तो व्हाई नॉट ये लॉर्ड के साथ कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और ये देखिए फिर दोबारा से लेन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है थोड़ा सा, ताकि वो एक हैवी मिनियंस भरे, आपको क्लियर करना पड़े वो मिनियंस को, और उसमें बहुत ज्यादा समय जाएगा आपका। तब तक के लिए वो लॉर्ड लेते हुए दिखेंगे, लेकिन अभी जो है लॉर्ड आने में थोड़ा सा समय है जरूर। यहाँ पे सेलेस्टियल ट्वाइलाइट बढ़िया तरीके से रुकेंगे, थोड़ा वेट आउट करना चाहते हैं, और उसी के साथ माउंटेन शॉकर का इस्तेमाल करेंगे जिसके कारण वो पोजीशन यहाँ पे रिवील होगी। लेकिन गलत पोजीशन यहाँ पे उनकी, और उसी के साथ एक रिटेलिएशन आता हुआ दिखेगा हमको। कोशिश रहेगी अंदर तरफ जाते हुए दिखेंगे, उसी के साथ लैंसलॉट वहाँ पे मौजूद है, फैंटम एग्जीक्यूशन यहाँ पे आता हुआ दिखेगा चिपेल को, और उसी के साथ रेड शील्ड लॉर्ड जरूर मिलेगा लेकिन बचेंगे नहीं, डबल किल मिलेगा। उसी के साथ स्लेन हो चुके हैं, सीजो अकेले बचेंगे, उसके साथ साथ कियोशी अभी वो जिंदा है। तो थोड़ी सी बोल सकते हैं कि सांस लेते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। मिड लेन से लॉर्ड आ रहा है, एमएम अभी भी जिंदा रहेंगे तो थोड़ी सी उम्मीद है वहां पे रह सकती है। इस लॉर्ड को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं है, वहां पे कोशिश रहेगी। थोड़ा सा बोल सकते हैं कि वो मिनियन प्रेशर गैप करने का प्रयास कर रहे हैं। लॉर्ड अभी फिनिश ऑफ करते हुए देखेंगे, लेकिन टॉप मिनियन से और बॉटम से मिनियन दोनों तरफ से आ रहे हैं इस समय। टीम अगर थोड़ी सी रहती है O2 वहां पे पकड़े। ओके वेलिंग गोल
यहाँ पर अभी वापस से नहीं कर पाए छाता लॉर्ड के साथ। कोई बात नहीं, वेलिंग गुल्स अभी भी गोल्ड लीड पे काफी ज्यादा है एंड उसी के साथ विद किल्स भी अभी है, बट क्यों नेबुला ना थोड़ा सा इजीली कम बैक कर रही है, वो ध्यान में भी रखना पड़ेगा। डॉफी यहाँ पर काफी ज्यादा फार्म हो रहे हैं, वो देखते हुए चलिए देखते हैं ट्राई क्या करेगी, क्योंकि वेलिंग गोल्स यहाँ पर अभी भी एंड करना चाहती है, बट नहीं, क्यों नेबुला इतनी अच्छी तरह से डिफेंड कर रहे, काफी अच्छे तरह से एक वॉल बना के रखे है, कहाँ वेलिंग गोल्स को ठोकने नहीं दे रहे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। O2 यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट मेंबर है, अगर ये वापस से पकड़े गए तो दिक्कत तो वैसे ही बढ़ते रहेगी, बट ऐसे ही बात करेंगे तो अभी कोई इनहिबिटर भी नहीं है एंड अगर यहाँ पर क्यों नेबुला एक अच्छे तरह से कमबैक भी दे देती है, पूरी तरह से मतलब वाइप आउट भी कर देती है, तो उन्हें काफी ज्यादा टरेट्स ओपन करना पड़ेगा। ये टरेट्स ध्यान पे भी रख के देखते हैं हो पाता है या नहीं। काजा काफी अच्छा सेटअप दे तो रहे हैं, O2 बैकअप भी दे रहे हैं, उनके हाथ पे काफी ज्यादा असिस्ट भी है, थोड़ा असिस्ट कम है फ्रॉम काजा, बट यहाँ पर किल्स भी अगर उन्हें हाथ में मिला तो डेफिनेटली अच्छा होगा। पीला अपने इमॉर्टलिटी लेके आया है, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टाइम बाय आउट करने के लिए, तो चलिए देखते हैं। कि बिल्कुल और कोशिश रहेगी, अल्टीमेट का इस्तेमाल किया, अंदर की तरफ जाएंगे, एमएम के ऊपर आरपीएम का इस्तेमाल करते हुए पीछे गए हैं इस समय, और यहाँ पे ड्रैगन को जरूर स्पॉट किया जाएगा। अब बात करें दोबारा से एक और लॉर्ड लेने की, वो कोशिश यहाँ पे होती हुई दिखेगी, लेकिन रिटेलिएशन पूरा आता हुआ क्यूई नेबुला की तरफ से, तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। वो मिनियंस क्या आपका जो छोर है ना, वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा संभल के रखना पड़ेगा, और यहाँ पे एमएम को संभल के खेलना पड़ेगा। हो सके तो अपनी पोजीशन जितनी ज्यादा हो सके आप सेफ रखने का प्रयास करें। ड्रैगन आएंगे, अंदर की तरफ घुसते हुए दिखे हैं और पेट्रीफाई कॉम्बो मारने का प्रयास, लेकिन पीछे बचते हुए दिखेंगे, अंदर की तरफ जाते हुए गए हैं, लेकिन वो लॉर्ड टोशी उनके हाथ से कैसे जाएगा। बचे यहाँ पे भी एमएम का इस्तेमाल किया जाएगा, एमएम यहाँ पे दाराशाही होंगी, उसके साथ पीछे से के वो भी जा चुके हैं इस समय। कियोशी अकेले मौजूदा रहेंगे, डॉफी के ऊपर प्रहार होता हुआ जाएगा, पीछे से बचते हुए निकले हैं, और सीजो वहां पे उनकी तरफ से आखिरी प्रयास। यहाँ पे पीछे की तरफ आई है टीम, बच चुकी है किसी भी तरीके से। क्यूई नेबुला आखिरी मूवमेंट पे एक बढ़िया बोल सकते हैं कि आप उनका जो रिटेलिएशन है वो आता हुआ दिखेगा, और उसी के साथ सीजो उनको जो है थोड़ा सा दिक्कत दिया गया है, सीजो को पीछे हटना पड़ेगा। मॉन्टेशो का इस्तेमाल किया, अंदर की तरफ देखना पड़ेगा, फैंटम एग्जीक्यूशन यहाँ पे गलत जगह फंस गए हैं। वायसस थोड़ा सा समय जरूर लेंगे, लेकिन बचेंगे नहीं। कियोशी लेजेंडरी लेके जाते हुए इस समय मिनियंस स्पॉन हो चुके हैं, लॉर्ड अभी भी जिंदा है, यहाँ पे डिफेंड कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन ड्रैगन वहां पे एक आखिरी आस बन के आए हैं, वो डिफेंड कर लेंगे। उनके पास ब्लैक ड्रैगन जब तक रहेगा तो एक आखिरी उम्मीद रह सकती है, लेकिन डिवाइन जजमेंट भी आ सकता है, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अंदर तरफ जाएंगे और उसी के साथ विंग्स उनका पॉप अप होगा, और O2 यहाँ पे देखना पड़ेगा, अंदर की तरफ गए हैं। सेलेस्टियल 12 बचने का प्रयास, बेस को लॉक करने का आखिरी, और उसी के साथ यहाँ पे पीछे फिनिश ऑफ करेंगे मिनियंस बेस को उड़ाते हुए, और उसी के साथ एक बढ़िया जीत यहाँ पे मिलेगी टीम वैलियंट घोल्स को। कमाल का गेम प्ले आता हुआ उनकी तरफ से। क्यूई नेबुला एंड में आते आते रिटेलिएशन दिखाया उन्होंने, और बोला कि दोस्त इतने आसानी से तो नहीं जाएंगे। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि आपने एक अच्छी खासी टक्कर दे दी थी, ऑलमोस्ट गेम आ गया था, लेकिन वहां से कियोशी उनकी तरफ से सिंगल हैंड में बोलूंगा यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई है। हर एक ऑब्जेक्टिव की बात करें, हर एक आप बोलें कि यहाँ पे फाइट की बात करें, या फिर उनका वो एग्जीक्यूशन कमाल का 14-0-3 का स्कोर रहा है, एक बार भी नहीं मरे, तो यहाँ पे सोच सकते हैं पीछे की किस तरीके का गेम प्ले आया है। काफी अच्छा लगा। 23 मिनट्स 4 लॉर्ड, मान ली 5 भी यहाँ पर ले ही चुके थे वैसे भी, तो काफी अच्छे तरह से खेले टीम वैलियंट घोल्स ने, बट यहाँ पर आई फील लाइक कानेकी जो है अच्छा सेट मारने के साथ साथ आई थिंक थोड़ा सा बैकअप प्रॉब्लम आ रहा था। मे बी यहाँ पर एक बर्स्ट हीरो उनके हाथ पे होता तो थोड़ा सा डिफरेंट सिनारियो देखने मिलता, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर देखते हैं टीम क्यूई नेबुला नेक्स्ट स्क्रिम के लिए कैसे अच्छे तरह से डोमिनेट करेगी, एंड इसी के साथ क्या ही मैच। आई थिंक आज का मैचेस काफी अच्छा जा रहा है, लाइक जो डोमिनेशन है, एक बार एनिमी के पास जा रही है, एक बार खुद के पास आ रही है, एक बार एनिमी के पास जा रही है। इवन फर्स्ट मैच में भी मैंने ये नोटिस किया। आई होप ये ट्रेंड पूरी सेकंड थर्ड फोर्थ पूरी यहाँ पर भी कंटिन्यू रहे।
जी बिल्कुल, ये दर्शा रही है कि टीम जो है इम्प्रूवमेंट करती हुई आ रही है अब। और ये अच्छा लगता है ऐसी टीम्स का जो है जो एक साइडेड ऐसी टीम जाती थी पहले, अब इम्प्रूवमेंट उनकी तरफ से आता हुआ दिख रहा है और टीम अब बेहतर हो रही है। तो बोल सकते हैं कि हम लोग अब धीरे-धीरे जो है अंडरग्राउंड का भी सीन चेंज होने वाला है। और ऐसे ही चेंजेस के लिए ज्वाइन करते रहिए आप एल्गाम्बो ई स्पोर्ट्स को, अपनी टीम लेके आइए, स्क्रिम्स वगैरह खेलिए और फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट मैच में, तब तक ले लेंगे एक छोटा-सा ब्रेक। हेलो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका फिर दोबारा वापसी आपकी होती हुई वो मोबा क्लैश में। और उसी के साथ हम भी वापसी आ चुके हैं। जिस तरीके का पिछला का मैच गया वो काबिल तारीफ, और इस बार लग रहा है कि आज सारे मैच जो है भाई अर्ली गेम में एंड नहीं होने वाले। 20+ जो मैचेस है वो हमें जाते हुए दिखेंगे। तीसरे मैच की तरफ हम बढ़ते हुए जाएंगे। टीम जो है ड्राफ्टिंग की तरफ बढ़ती हुई यहाँ पे गई है, और एक तरफ रहने वाली है यहाँ पे मोरियस रॉयल्स और दूसरी तरफ रहेगी यहाँ पे टीम टेलोस। उसी के साथ दोनों टीम की बात करें तो काफी अच्छी तरीके से खेलती है दोनों ही टीम, लेकिन आज थोड़ा सा ना बेटर होने का मुकाबला चल रहा है कि कौन सी टीम यहाँ पे बेटर है आपसे। तो लेट्स सी यहाँ पे कि इन दोनों में से आज कौन बेटर निकलता है। क्या लगता है पीछे किसकी यहाँ पे बोल सकते हैं कि पड़ला जो है भारी दिख रहा है आपको? चलिए बैन देखते हैं। बैन की तरफ से देखते तो काफी
ये है मतलब कॉमन बैन है, कुछ जो ना हटके से कुछ अलग सा भी नहीं दिख रहा है, बट वो क्वेश्चन मैं ग्राफ देख के बताती हूँ कैसे होगा। इसी के साथ आई थिंक क्लॉड जैसे हीरो भी यहाँ पर बैन होने वाले हैं। लास्ट मैच क्लॉड काफी अच्छी तरह से खेले, बट वही था कि उनकी टीम अच्छे तरह से उन्हें चांस नहीं दी, एक अच्छा सा एक स्पेस नहीं दिया, तो उसी के कारण काफी अंडर परफॉर्म हो चुके थे। बट ये मैच में अगर क्लॉड आ रहा है तो वो बात मुझे वापस से नहीं देखना है। मॉरिन रॉयल्स वैलेंटीना हटाते हुए तो मतलब यहाँ पर सोरा, मार्शल, नहीं चलो मार्शल तो बैन हो चुका है तो वो तो है ही नहीं। मार्शल वापस से मार्शल बोल रही हूँ, माय गॉड, मतलब एटलस और यहाँ पर बात करें तो मेरी सोरा ऐसे हीरोज आ सकते हैं। मॉरिन रॉयल्स फर्स्ट पिक, एटलस आई थिंक यहाँ पर मैं लॉक ऑन करना चाहती हूँ। हम्म मे बी अकाई बादशाह। चलिए एटलस, फिर से एटलस के साथ जाते हुए दिखेंगे हमको इस बार। अब देखते हैं दूसरी साइड पे क्या आता है इनका ऑप्शन चलिए टीम टाइप सेकंड तरफ से। जी बेलरिक होना चाहिए। एटलस के लिए काफी अच्छा है। यहाँ पर तुम बेलरिक के साथ एक फ्लिकर अल्टीमेट कॉम्बो भी कर सकते हो, जैसे एटलस करेंगे तो एक अच्छा सा काउंटर मूव होगा। जैसे ही एटलस अल्ट मारेंगे तो तुम भी पीछे जाओ और अल्ट मारो, ऐसे वाला कॉम्बिनेशन मुझे देखना है। बट नहीं, टीम जूशियन लेते हुए, जूशियन के साथ पकीटो। पर अगर यहाँ पर मॉरिन रॉयल्स लेना चाहती है थोड़ा बहुत टैंक जंगल, जैसे मान लो कि फ्रेडन हो, क्योंकि पकीटो दिख रहा है काफी अच्छा डैमेज देंगे। यहाँ पर उनको जंगलर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, मार्क्समैन को प्रोटेक्ट करने का पड़ेगा एंड मेज प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर यूटिलिटी जंगल ले लेते तो एक जन कम हो जाता है एटलिस्ट के हाथ पे, तो मे बी यूटिलिटी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन हियर। तो देखते हैं टीम टेलोस क्या करेंगे। काफी अच्छा लग रहा है कि उन्होंने जूशियन लिया है, बट वही बात है कि जूशियन के साथ पोजीशनिंग बहुत मैटर करता है। देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जूशियन की जीत होती है या नहीं। जी बिल्कुल, और उसी के साथ यहाँ पे सोरा वो आते हुए हमें देखेंगे। सोरा एटलस कॉम्बो काफी अच्छा रहेगा। देखा जाए तो टीम यहाँ पे जो वॉरियर रॉयल्स है वो कहीं ना कोशिश कर रही है कि एक बॉक्स के अंदर ना टीम्स को खिलाने का, क्योंकि तो यहाँ पे आरडब्ल्यूएम आएगा, फिर सोरा का अल्टीमेट आता है शिफ्टिंग क्लाउड, उसके साथ साथ एटलस वहां मौजूदा रहेंगे, तो स्लो डाउन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। और उसी को ना यहाँ पे वो भीड़ हटाने के लिए अकाई आते हुए दिखेंगे, और वही यहाँ पे काम करेंगे अपने हैवी स्पिन के द्वारा। तो एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे होती हुई दिखेगी। बात करें पकी तो अभी थोड़े से फ्लैक्स पिक भी बोल सकते हैं, जंगल पे भी खेलते हैं काफी सारे लोग, जंगल पे भी अच्छा खासा चल जाते हैं पकी तो अभी देखना पड़ेगा कि पकीतो ईएक्सपी जाएंगे या फिर जंगल जाएंगे। अगर ईएक्सपी पे कोई दूसरा ईएक्सपी आता तो तब भी अच्छा हो सकता है, मे बी शायद। लेट्स सी यहाँ पे क्या उठाना चाहते हैं। उससे पहले बैन यहाँ पे आते हुए देखेंगे, बादशाह बैन आया, उसके साथ साथ मॉस को बैन किया गया। एंड मोरेस कहीं ना कहीं चाहती है ना उनकी तरफ से एमएम के ऊपर टारगेट किया जाए। चलिए एक एमएम तो आपने बैन कर दिया, मॉस को यहाँ पे बैन किया है ताकि वो टीम फाइट ज्वाइन करते हुए हमें नहीं दिखेंगे अपने एसओडी से। ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है यहाँ पे आपकी। लेकिन दूसरा एमएम क्या बैन करेंगे, यहाँ पे क्लॉड बैन आता हुआ हमें दिख सकता है, क्योंकि क्लॉड बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है ईव को, क्योंकि ईव जो है यहाँ पे एक तरफ जब भी अल्टीमेट लगाती है तो वो बहुत ज्यादा वनरेबल होती है, पीछे से बैक डोर कर सकते हैं यहाँ पे क्लॉड अपने बीएमआई के थ्रू, तो वो कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि दिक्कत बन सकते हैं आपके लिए। तो देखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हैरिथ बैन किया है, उसके साथ साथ टीम देखते हैं यहाँ पे क्या बैन्स करती हुई दिखेगी। आखिरी बैन आने वाला है, टीम के साथ थोड़ी विचार, क्या ओके, लगता है पीछे क्या बैन आ सकता है। मार्क्समैन आई थिंक वापस से यहाँ पर क्लॉड करो या तो एक अच्छा सा जंगलर भी कर सकते हो। एंड अखाई बहुत सारा टीम जो ने देखा है कि बेट करती है लिटरली, यहाँ पर बताती है कि नहीं मैं यहाँ पर जंगल अखाई खेलने वाला हूँ, बट वो टैंक जंगल बन जाती है एट द एंड। तो मुझे वो वाली फीलिंग अभी यहाँ पर आ रही है टीम टेलोस के हाथ से, तो वही लग रहा है। चलिए देखते हैं अगर वो है या नहीं। अभी भी काफी चांस है फ्रेडरिन उठाने का। ओके नेवर माइंड, फ्रेडरिन तो चला गया, बादशाह भी चला गया है। अगर टैंक जंगल यूटिलिटी के बारे में करें तो ऐसा कौन सा हीरो है यहाँ पर, मे बी बट ओके मॉरियन रॉयल्स काफी अच्छी तरह से उन्होंने काउंटर ले चुके हैं। बालमंड का गेम मेरे को ये लास्ट वीक से देखना था, तो आज फाइनली देखने मिल रहा है। अभी भी उन्होंने रखा है अकाई एज ऑफ फ्लेक्स,
चांसेस नहीं लेना चाहती है, असैसिन्स नहीं ली है, बट मॉरियल रॉयल्स का वही एक बात है कि जो लेट गेम है वो काफ़ी तगड़ा है विद द बीट्रिक्स, क्योंकि बीट्रिक्स और सोरा का कॉम्बो उनका रेंज इज़ डेफिनिटली अच्छा, बट टीम टेलोस के पास फ्लैंक करने का बढ़िया-सा है, यहाँ पर बगेटो अपने एनिमीज़ का लो कर सकती है और फ्रीज़ के साथ बीएमआई होने का जाने का क्लाउड के पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एंड यप टीम टेलोस मेरे को गलत प्रूव करते हुए अकाई ऑन टू अ जंगल, तो मतलब पालमंड उठाने का एंड वो जो खड्डा बना के रखे थे टीम टेलोस के, आ जाओ गिर जाओ मॉरियन रॉयल्स, वो गिरे नहीं है, तो काफी अच्छा लगा ये, कुछ तो इंटरेस्टिंग है। बट शिंद्रा, जी। क्या ये गेम 23 मिनट्स के आगे जाएगा या नहीं, क्योंकि पहला 2 गेम्स गया है, क्या ये लोग कंटिन्यू करेंगे वैसे? यहाँ पे थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। आई मीन देखिए मटिल्डा पिक मैं बोलूँगा कि चलिए आपने उठा लिया, अच्छा है, बोल सकते हैं बट यहाँ पे ना एक डाउन साइड भी है। आपकी टीम बहुत ज़्यादा स्क्विशी हो गई यहाँ पे और सोरा कहीं न कहीं उस बात का फ़ायदा ज़रूर उठाते हुए दिखेंगे। डैमेज थंडर फॉर्म में जाते हैं ना तो ईज़िली वो खुद तो ज़्यादा शाही हो जाएँगे, लेकिन वो आपके 1 या 2 किल ऐसे कैरी किक जो है यहाँ पे किल्स उठा जाएँगे, जिसके कारण आपकी टीम को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो टीम टेलोस को थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, अपनी पोज़ीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहीं न कहीं मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। और देखिए उसी के लिए यहाँ पे 3 प्यूरीफाई आते हुए हमें दिख रहे हैं, वो भी सिर्फ एटलस के लिए, ताकि उनकी तरफ से अगर एक कॉम्बो अगर लग गया ना तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। और उसके साथ-साथ यहाँ पे दिखेंगे बालमैन, थोड़ी कोशिश रहेगी उनकी इन्वेड करने की, नई तरफ आते हुए जी बिल्कुल, यहाँ पे इन्वेड करने का प्रयास पूरी तरीके से आता हुआ दिखेगा। अंदर गए हैं, रेट्री ज़रूर लगाया है यहाँ पे और ब्लू बफ लेते हुए दिखेंगे हमको। अभी लगातार यहाँ पे बालमैन जो है परेशान करते हुए दिख रहे हैं। अब रेट्री यूज़ हो चुका है यहाँ पे अकाई का, तो वो कहीं न कहीं कोशिश रहेगी उनकी कि ये ब्लू बफ मिल जाए किसी भी तरीके से। अंदर तरफ गए ज़रूर है, लेकिन फर्स्ट ब्लड वो मिलेगा यहाँ पे एमएम को और उसके साथ-साथ वो बफ भी मिल जाएगा जो ज़रूरत थी यहाँ पे। बढ़िया रोटेशन आता हुआ वो उसी के साथ पूरा भरपूर रूप से फ़ायदा उठाया उस चीज़ का। अंदर गए वो रेट्री यहाँ पे यूज़ करवाया उनका क्रीप के ऊपर। अब यहाँ पे ना एक सिचुएशन क्या आती है कि अब नोटिस करेंगे एमएम का भी रोटेशन आ गया था, तो कॉलिंग बहुत अच्छी थी। अगर एमएम का रोटेशन नहीं आता तो अकाई अकेले नहीं मरते, तो यहाँ पे एक अच्छा आपने कॉल ज़रूर ले लिया है। लेकिन ना अब बफ लेने का लेकिन इतना फायदा होता नहीं है पीछे। पहले फर्क पड़ता था, आप एक सिंगल बफ भी ले जा लेंगे ना तब भी वो रिकवर कर सकते हो छोटे क्रीप मार के। तो यहाँ पे अकाई को अब यही करना पड़ेगा, किसी भी तरीके से फटाफट से अपने जो छोटे क्रीप्स है उनको क्लियर आउट करना पड़ेगा और फटाफट से लेवल 4 यहाँ पे जरूर हो जाएंगे। एक बोल सकते हैं कि रेट्री गैप जरूर हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आप भरपाई यहाँ पे वो उनका जो हैवी स्पिन है वो आके कर सकता है। उसी के साथ यहाँ पे जाते हुए जरूर देखेंगे और ये देखिए लेवल 4 होने ही वाले, जो जरा सा थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। मिस्टर डॉट उनके ऊपर प्रहार होता हुआ पीछे हटेंगे और यहाँ पे रीजन का इस्तेमाल किया है और पतंग यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जो बालमेंट है वो आ चुके हैं और टर्टल लेने के लिए तैयार है। पीछे एटलस वहां पे स्टन करते हुए दिखेंगे। पकीतो मौजूदा है और पकीतो के ऊपर थोड़ा मैं बोलूंगा कि ज्यादा प्रहार हो रहा है। उनको थोड़ा सा लेट जो है ना डोमिनेट करने में दिक्कत हो रही है सोरा के अगेंस्ट में। वो सोरा बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं पीछे रह के इस समय और ये फिर दोबारा चुराने का प्रयास किया है मैम, तो और थोड़ा देनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप रोटेशन नहीं दोगे अपनी टीम को ना तो कहीं ना कहीं वो आप मिस कर रहे हो जो डैमेज की बात है। गेम के थ्रू जाएंगे जरूर पीछे, लेकिन यहाँ पे सोरा उनका अल्टीमेट आएगा, टावर के अंदर ज्यादा गए और चलिए खुद तो मरेंगे यहाँ पे पकीतो को, लेकिन दाराशाही कर दिया। और इसी की मैं बात कर रहा था कि सोरा कहीं ना कहीं यही कोशिश करेंगे, डैमेज बिल में जाएंगे, खुद तो मरेंगे लेकिन साथ में जरूर किसी न किसी को लेके जाएंगे। पालमा आएंगे, फिर दोबारा वो क्रीप चुराया जाएगा। वेटिंग लिस्ट का इस्तेमाल किया लेकिन वहां पे कोई मौजूदा नहीं था और उनकी अल्टीमेट में सिर्फ नतालिया ही आएंगी इस समय। ओके मॉडर्न रॉयल्स यहाँ पर काफी अच्छे तरह से खेल रही है, उन्हें पता है कैसे एडवांटेज लेना है इन दी अर्ली गेम एंड वो ही तरह से खेल रहे। जितना मुझे याद है सैनफोर्ड यहाँ पर आई थिंक लास्ट यहाँ पर मैनियक या सैवेज निकाल के गए थे अर्ली गेम पे। उनका काफी अच्छा एक प्रेजेंस था, आई थिंक वही सेम बनाते हुए यहाँ
पर वकीलों को काफी काम नहीं देना इज रियली गुड थिंग, क्योंकि जितना ज्यादा तुम वकीलों को काम दो उतनी अपनी पूरी एनिमी टीम को काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। तो वही ध्यान पे रखते हुए देखते हैं टीम्स क्या करने वाली है। मॉरियन रॉयल्स यहाँ पर टॉप लेन पे प्रेशर बनाती हुई, सैनफोर्ड 50% की एचपी है एंड यहाँ पर इंडिया पकीटो पूरी तरह से स्टैक्स खोल रहे हैं, काफी लो सैनफोर्ड पर उनकी टीम आ रही है टॉप लेन पे। टॉप लेन में आना पड़ेगा इंडिया पकीतो वहां पे मौजूदा। आई थिंक इंडिया पकीतो पिछले बार ना भाई वो सूरा खेल रहे थे, ज्यादा मेरे को याद है। एसटीजी और मैं यहाँ पे कास्ट कर रहे थे इनका गेम, टीम टेलोस मेरे को याद है, और सूरा खेल रहे थे उस समय। तो वहां पे तब अच्छी तरीके से बहुत बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहे थे उस समय। तो लाइक हमने बोला था कि यहाँ पे नाम तो आपने इंडिया पकीतो रखा, खेल आप सूरा रहे हो। और यहाँ पे देखना पड़ेगा, थोड़ा संभलते हुए आएंगे जरूर। एटलस गए जरूर अंदर की तरफ, पीछे डैमेज देते हुए दिखे। पैकलिंग को टारगेट करना चाहती है इमेज, लेकिन उनको वो मौका नहीं मिलेगा। ईव की तरफ से बढ़िया रिटेंशन आता हुआ दिखा। बेब्लेड का कमाल किया जाएगा, अल्टीमेट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे टर्टल चुराया जाएगा। बॉक्स के अंदर लेके आए सोरा की तरफ से कमाल का अल्टीमेट, और ये सेट लगेगा कंप्लीट होता हुआ। डबल किल मिलेगा यहाँ पे बालमन को, ट्रिपल किल में क्या हमें आता हुआ दिखेगा। कोशिश जरूर, लेकिन सेंसे यहाँ पे किल लेते हुए जाएंगे। और लेजेंड सेंसे भाई ये सेंसे वाले सारे नाम के ना भाई खेल उठाते हुए ले जाते हैं। हमारे साथ भी हैं एक, हमारे साथ खेलते गेम में सेंसे नाम के, वो भी भाई हमारे खेल उठा के ले जा लेते हैं कई बार। यार बेचारे का मेनियाक उठा के ले गए, बालमन का मेनियाक था वहां पे। पड़ेगा ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, कह देते हम वो आपको मेनियक दे देंगे। काफी अच्छी तरह से खेले हैं यहाँ पर, काफी अच्छी तरह से, और ही इज मेकिंग श्योर कि अच्छे तरह से वो डैमेज ले। हाँ जी बिल्कुल। और ये देखिए फिर दोबारा एटलस आएंगे, लगातार बुली कर रहे हैं अपने आर्टिक कोल्ड के साथ। सर्जिकल ईगल का इस्तेमाल किया जाएगा एमएम के ऊपर। एमएम चालाकी से गई है पीछे बचते हुए, और बढ़िया तरीके से बचेंगे यहाँ पे मिस्टर टच। वो फिनिश ऑफ होते हुए पेबलेट आएगा बॉलमैन, और हेलीकॉप्टर बाय बाय करेंगे चाचा नेनी। और उसी के साथ गए यहाँ पे अकाई, सुला दिया जाएगा उनको। पेबलेट से घूम के सर घूम गया था, उन्होंने बोला कि चलिए आप थोड़ा रेस्ट लीजिए। यहाँ पे बालमैन अंदर की तरफ जाएंगे और एक और किल यहाँ पे मिलेगा। मैच फिर दोबारा से एक और किल लेके जाएंगे। सेंसे अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं आप, देखो यार ऐसा ना करो यार। और यहाँ पे ब्लू बफ की तरफ आ चुके हैं बालमैन, लेके जाएंगे सीधा इस बार टीम टेलोस की तरफ से। थोड़ा सा बोल सकते हैं कि अर्ली गेम उनके हाथ से अब निकल चुका है, अब सिर्फ गुरार रहेगी लेट गेम की। और लेट गेम में सिर्फ उनके एमएम जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे ना, मेज को इतना ज्यादा बोल सकते हैं कि ओपनिंग मिल नहीं रहा है। वो बोल सकते हैं जो फ्री हैंड दिया जाता है मेज को, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसके कारण मेज एक अच्छी पोजीशन नहीं ले पा रही है। ईव उनको हर समय काउंटर कर देती है पोक करके, उनका एचपी जो थोड़ा सा गिरा के, जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल पा रही है। यहाँ पे पक्की तो मौजूदा रहेंगे, कॉम्बो लगाया जरूर है, अभी भी वेट कर रहे हैं। सोरा आप चुके थे कि वहां पे बुश पे जरूर होंगे, बुश चेक करिए इस समय। एक हैवी स्पिन अगर आता है अकाई की तरफ से, सोरा को लॉकडाउन करते तो यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन बन सकती है, लेकिन भाप लिया सोरा ने, सीधा पीछे गए हैं। और टॉप लेन से यहाँ पे जो है फाइट होते हुए दिखना चाहते थे, लेकिन अभी पीछे हट गई है टीम। उन्होंने भी भाप लिया कि उनका जो बैकअप है वो आ चुका है इस समय। सोरा जाएंगे अंदर की तरफ, डैमेज आएगा जरूर, पीछे बैठे हैं मिस्टर टॉच, आपको बचना पड़ेगा इस समय। और यहाँ पे बाल बाल बचते हुए पक्की तो मौजूदा। देखा जाए ना, सोरा के साथ यही दिक्कत है, अगर उनको स्टार्टिंग में शट डाउन ना दिया जाए ना, तो फिर काफी सारे बोल सकते हैं कि एक्सपी के ऊपर भारी पड़ते हैं, क्योंकि सिचुएशनल के हिसाब से ना वो खुद को चेंज कर लेते हैं। अगर थोड़ा टैंकी की तरफ जाएंगे तो वो थोड़ा सा यहाँ पे बोल सकते हैं कि शिफ्टिंग क्लॉड लगाते हुए दिखेंगे, या फिर थंडर क्लॉड जो है वो लगा सकते हैं जब वो जाते हैं अपने डैमेज की तरफ। तो वो फॉर्म बहुत ही अच्छी तरीके, और देखिए कितने अच्छे तरीके से जोन आउट कर दिया है, जिसके कारण वो टावर उनको टॉप का मिलेगा। अकाई की तरफ से कोशिश रहने वाली है। अब अकाई मेरे ख्याल से आपको हैवी स्पिन मार देना चाहिए था वहां पे, और एमएम को ना या तो आप बाहर निकाल देते टावर से, ताकि आपका एमएम जो है वो टावर ले पाए सिक्योरली, या तो फिर आप हेड स्पिन मार के ना उनको रोक सकते थे। कोशिश वहां पे आ सकती थी, लेकिन थोड़ा सा अभी जो है संभल के खेलते हुए दिख रहे हैं टीम टेलोस। चलिए काफी अच्छी तरह से खेल रही है टीम यहाँ पर, सेफ जितना, क्योंकि ये बात है। ओ बाय, कमाल का फिटलिंग्स आएगा जरूर, बॉक्स के अंदर खिलाया जाएगा, अनसॉवेबल लेके जाएंगे। बालमैन इस समय क्रिप्टोनाइट बन चुके हैं टीम टेलोस के लिए, और लगातार डैमेज और ट्रिपल किल। फिर दोबारा मेनियाक की गुजारिश, मिलेगा या नहीं? मैच के द्वारा शट डाउन नहीं दिया गया मेनियाक, फिर से
और एक बार फिर से बोला है बालमन को, सिट डाउन बालमन, आप बैठ जाइए, आपको मीनियक आज नहीं दिया जाएगा। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, इनका पहला डेथ है यहाँ पर। एंड जैसे टीम टेलोस खेल रही है काफी कम किल लेते हुए, मॉरिन रॉयल्स पूरी तरह से अभी भी डोमिनेट कर रही है। एक किल के वजह से थोड़ा सा गोल्ड गैप क्लोज हो रहा है क्योंकि कैरन के पास काफी ज्यादा फाउंड था। एंड ये देखिए 6.9 के गोल्ड, वो भी एनिमी के हाथ पे, वो भी विंटर के हाथ पे जाते हुए उनका गोल्ड भी बढ़ रहा है। चलिए लॉर्ड आ चुका है, पहला नहीं दूसरा लॉर्ड होगा। एंड ये लॉर्ड के साथ देखना पड़ेगा कि टीम्स क्या करने वाली है। एक बात है कि टीम टेलोस जो है अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि वही बात है कि पोकीटो को फ्लैंक करने नहीं मिल रहा है, विंटर गोस्ट को चांस तो मिल रहा है बट वो बहुत रेयर है कि वो उन्हें वो किल मिल रहा है। बट विंटर शैडो जो है अकाई, उन्हें भी एक अच्छा सेट देना पड़ेगा। और लेन ओपन करना चाहती है, बछोरा राइट टाइम पे आ तो जाती है बट यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा बुश चेक करके रोक भी पाते तो काफी अच्छा होता। थोड़ा सा और टाइम बाय आउट कर लेते, मे बी यहाँ पर बीट्रिक्स को चांस मिलता एक अच्छे तरह से पुश करने का। बट कोई बात नहीं, बालमंड आ चुके हैं एज अ सेकेंडरी टैंक, बट इन्हें मैं टैंक को नहीं मानूंगी। 7-1-3 एंड ये स्कोर के साथ टैंक डेफिनेटली नहीं। मे बी यहाँ पर 1-2 किल लेने का भी काफी ज्यादा चांसेस है। जूशन के आगे मे बी नॉट, बट ओके। ओ थोड़ा सा देखना पड़ेगा दोस्त। और यहाँ पे देखिए लगातार रिटेलिएशन आता हुआ दिखेगा और लगातार जो स्ट्रक्चर है उसकी लॉस हो गई। यहाँ पे पेडिंग ने इस्तेमाल किया है, फकीतो को पकड़ा जरूर है, सोरा की तरफ से कमाल का यहाँ पे सेटअप और उसी के साथ बालमंड आएंगे, अल्टीमेट का इस्तेमाल किया, फिनिश ऑफ किया जाएगा। मौका नहीं दे रहे यहाँ पे इस समय बालमंड, पूरी तरीके से क्रिप्टोनाइट बने हुए टीम टेटलस के लिए और लगातार उनको दिक्कत पे दिक्कत दिया जा रहा है। और सोरा एटलस का कॉम्बो कमाल का कॉम्बो यहाँ पे बनता हुआ, एक सीसी से आप बचते हैं तो दूसरा सीसी तैयार रहता है यहाँ पे। अब प्यूरिफाई आपने लिया है जिसके कारण आप एक ही बार बच पाओगे, या तो आप सोरा से बच पाओगे या तो आप यहाँ पे एटलस से बच पाओगे, लेकिन बालमंड से कैसे बचोगे? उनके डैमेज से बचना इस समय मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन साबित हो रहा है। और ये देखिए लगातार डैमेज आता हुआ देगा सोरा की तरफ से, कमाल का है आप इस सेटअप, थोड़ा अंदर की तरफ मार दिया लेकिन अभी भी टीम जो है सर्वाइव करने का प्रयास कर रही है। लेकिन वो डैमेज यहाँ पे लगातार आता हुआ दिखेगा। मिनियंस अभी खत्म हो चुके हैं और बिना मिनियंस के ही वो टावर डैमेज टुकअप कर रहे हैं पूरा। एक एचपी बचे हैं बालमंड, मिनियंस दूर ले जाने की कोशिश पकीतो की कमाल की, लेकिन वो मौका नहीं मिलेगा और उसी के साथ ये गेम को अर्ली गेम पे ही फिनिश ऑफ कर दिया गया है। कमाल का गेम प्ले आता हुआ इस बार टीम टेलोस, उनकी तरफ से अच्छी शुरुआत हुई नहीं। जिस तरीके से वो क्रीप वहां पे गया रेटरी यूज करवाते हुए, फिर उनके बाद उनका जो बफ था वो यहाँ पे चला गया। अब डेफिनेटली 9-1-6 के साथ एमवीपी यहाँ पर लेके आते हुए गेनेट, ये ना वो अर्ली गेम से जैसे उन्होंने पुश किया है वो काफी इम्पोर्टेंट था एंड उसी की वजह से उन्हें इजीली वो एक कमबैक मिला है। एंड आई थिंक यहाँ पर टीम यहाँ पर वो जो 20 मिनट्स प्लस का जो ट्रेंड था डेफिनेटली ब्रेकआउट करती। 11 मिनट लगा बस। बिल्कुल, और वो 20 मिनट्स का जो कर्स था ना बेसिकली वो टूटता हुआ दिखेगा हमको पीछे इस बार। और यहाँ पे बढ़िया तरीके से ये गेम जो है बढ़िया तरीके से यहाँ पे खेलती हुई दिखी है टीम जो रॉयल्स थी उनकी तरफ से, कमाल का गेम प्ले आता हुआ। और यहाँ पे जो है उसी के साथ अगला मैच, उसके लिए टीम जो है वो रेडी होती हुई दिखेगी नेक्स्ट मैच के लिए। देवियो सचिनो आप लोग भी रेडी हो जाइए, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको, नए कास्टर्स यहाँ पे ज्वाइन करेंगे कास्टिंग के लिए। मैं था कास्टर आपका शिमला, मेरे साथ कास्टिंग करी थी पीछी। लेंगे आज के लिए आप सभी से अलविदा।
We're having a lot of dominating series of matches and quite a lot of extended ones in this evening. And now we're back with another one, ladies and gentlemen. Welcome back once again to MOBA Warmup Clash series that we host every week. 3 days of the week, we are back in action to give the teams a competitive stage to, of course, battle it out, to duke each other's strategy and see how they're faring against each other. Now we're going to be heading towards the game against, of course, Team Mavericks versus Quantum Eclipse Nova, which is, of course, teams you might have already known. They have been here since, of course, the beginning. We've started the scrims and they have been improving tremendously. It's really nice to see the improvement. But regardless of that, we'll see, of course, what they can pull up in tonight's scrims. This is a BO1. There's no elimination. It's just friendly scrims, but set in a competitive stage. Myself, of course, I'm ready to be the voice of the game with Ash TZ on the desk. So, Ash, of course, how are you doing? I believe you have already casted the first one, and now you're back again on the fourth. Definitely, and literally the first one was kind of a roller coaster ride. Sometime I think Will of D gonna win. They had a better chance, but then we saw the drastic comeback, a dramatic comeback from the side of from one team, base turret. Gravenoise. One base turret, yeah, from one base turrets to taking down the whole crown. And I believe, even though that Lord Still from the Kaja was one of the greatest, but right now into this game, Team Mavericks, it's not a thing to say here. It's not a good thing to say though. But I do play with so many Team Mavericks players in my rank games. Okay, like randomly they came in. They just asked me, "Are you the same HTC?" I said, "Yep, I'm the same HTC." And then we started playing with each other. And if I'm not wrong, it's Fly onto that Zetian. He does play good with the Zetian. But into the way, QE Nova. Well, they're gonna go for the Ishinshin again because we have been seeing Nova, Nebula, Zenith, they love to play the Ishinshin jungle. Yeah, they've been spamming the Vices quite a bit. Considering we have the Zetian, we might see the Farsa and the Phobius show up as. Maybe the Farsa and the Phobius, or maybe they're gonna go for the, the classic Eve against the Zetian, but no, the first. Oh yes, the only one bound by these I got chains. it. You always take a few moments to realize I have my third eye open. Yeah, I heard that thing though. Like I was doing some sort of work at that moment, and then suddenly it came into my mind that okay, fine. But when I said glue, it was pure, pure third eye. If you know the reference I'm giving up, but Minotaur, Esmeralda into this meta. I asked even Maverick, like, bro, why are you going for this? Because they said, like, it's a scream, we're trying. That's it. Yeah, that's the point, isn't it? Yep. They can pick up the carry right now, of course, because there's so much tanky heroes from the side of Team Mavericks. And I really love the teams that are, testing the waters and practicing different heroes on these scrims. Of course, you don't want to go full on like unknown meta hero without like at least practicing in the ranked games first, right? You should definitely test a few heroes in the ranked games. If it's working, then you can, of course, try it on the scrims against another team. And I believe Mavericks is kind of doing those things, and they have gotten a few losses, but they have gotten a few wins. I've seen them come up with variation of the drafts, and I love to see this because it keeps the strategy and hero pools better. Because, of course, let's be real, when you go to the very top dog stage, right, it's the same 3 heroes in every role that are going to be getting picked and banned. And we see them, the most prioritized because people are not, ready to commit into something non-meta. And also, the only time you would see is pocket picks. For example, the Benedetta sometimes shows up into the XP lane. In the mid side, you'd sometimes see, like, what is that? One of the mid lane is not exactly like pocket pick. Almost all the mid laners are kind of like decent, right? But gold lane, we sometimes see, what was that hero again? God damn it. Oh yeah, the Leslie sometimes show up, right? So it is nice when we do see the pocket picks. But right now, since the bans are here with the marksman, let's see, what is it going to be? It's the... Ash, do you want me to open my third eye again? I'm just kidding. Yeah, you can. It's Kaja. But I think it's Kaja, maybe the Kaja, because but early Kaja, don't you think? Like, it could have been into the last pick because somehow they haven't go for their jungler yet. Now they will be conscious about it. If they would have the Vices is open, assassin.
they might gonna go for the Ishin Shin in the last pick. That's why they're rendering this jungle pick into the very end. But now, oh no, they traded it out into the hand of Team Mavericks. And Maverick does have a chance to go for the gold Bruno or guess they G can play a Razy fighter. Spatial Ranger. They can play a fighter to balance YSS into the jungle, because he's semi-marksman. They can try the dual fighter strategy. And there we go. We'll get the Ruby gold lane popping in. And right now, last pick for the side of QB Nova. They can obviously have a lot of options. They can go to Guinevere. They can go with, I guess, a Lancelot. Or what do you think? Guinevere. Why should you ask me? Like, you shouldn't ask me here at least. No, I need your opinion. The day it's fine. Well, I'll talk. I'll have a talk with Preetham by next game. I'll be there. I have more devices with me. I'll be there too. Oh wow, But Ash is now- flexing his devices. No, but we'll be entering into the game. But now, Raven, your thought. I can't say this. First blood. Whom? First blood. For sure, Guinevere can get it. Yeah. There we go. Okay, let's see if Gwynny can do it or not. If it's Gwynny, then I'll definitely say it's third eye of a Raven. But here we are, ladies and gentlemen, for the game number 4 at the weekly Scrim clash between Team QE Nova versus Team Mavericks. We have seen Maverick winning the last 2 weeks' games, but now Nova. If you remember, Nova has a rough time last time. This time they want to try their best, want to take on the game, because last time they defeated by their own brothers of same mother. That is QE Nebula. Yeah, last week they, of course, by their own request, actually, they faced the side of QE Nebula, and they defeated. They faced a defeat. And right now, of course, they're. I believe the reason we are seeing so many QE Nova is because they're trying to get better than each other, which is great, right? It's like brotherhood rivalry. Yeah, it's nice to see. But towards the mid side right now, of course. Ooh, clutch victory. I don't know, Ray. Like, can you tell me like if the jungler of Nova is getting changed or the IGN is just getting changed? Like, I'm not too sure actually. I didn't exactly check, but if it's Albert Einstein, I'll have to ask actually. It could have been changed. I've not actually seen him lately, so maybe this is a new jungler they're trying. Else. I've seen someone else in the last game against Nebula. Now this is noisy. Yeah, they might be trying out new people. Of course, they're testing new junglers. It's always nice to have substitutes ready, of course, if you're playing tournaments, right? So maybe they're testing new waters. We might see Albert next scrims, which is, guess what, ladies and gentlemen, it's being hosted on Friday. So of course, if you are a team that wants to register, we are already open. Mid-side. Okay, they're gonna go for the first blood here. Mr. Constant gonna get the first blood, consistent actually, and now he's gonna go for a turtle. That might be the easy turtle. I don't think Noisy gonna contest it out, but from the behind, Houdini is coming in. Houdini might gonna go for the Infernal Pursuit, but he's onto the Minotaur. Nobody's contesting the turtle. Okay, look at Noisy into the pit. Gonna go for the special Black Retribution onto the mark. Got the turtle there and to the hand of Consistent. And there you go, another kill. Castle falls down into and the suppression. We're gonna go for G-Razy. Houdini fed the slain. 2 for 1. Turtle on. Team QE Nova. They did not get the first blood, but they did trade it out properly. Now, of course, QE Nova, after his first blood, I honestly thought Mr. Consistent and getting the first blood might be giving them a little bit of a better angle. But immediately, like, clap back, 2 kills. Very fast response on the side of QE Nova. Right now, we take a look into their items, of course. And Houdini on the EXP side, 101. He will have a lot of comfortable spot to, of course, take care of. YSS going with the Hunter Strike, Ruby with the War Axe, Carry with, of course, the Corrosion. And the rest members, they are just going with a classic standard itemization with nothing much out of the extraordinary. I honestly thought Ruby might, since she's, playing the Golden, she might go for the Hunter Strike first to get a little bit of more damage, especially considering Ruby has been, getting the damage buff. But I guess going for the War Axe still makes sense. But bot side, more Million Fury. Wow. Okay, so
Well, they're gonna go for the skirmish again, and now you're gonna see that slain happen onto the hand of Farsa, and that's a retreat for the side of team Kiwi Nova as the Roma goes down, and Noisy falls down as well. Double for the side of team Maverick. Trade shifted, you can say that. So right now, the score is 3-3, Ash. And of course, Team Mavericks, they also responded immediately with 2 kills on their end. But of course, they trade out 1, and which was, of course, none other than over here, G, Razy, and Curse Soul, 2 deaths and 1. G, Razy, I'm surprised, like I said, right? Ruby right now, she's not exactly the sustain queen she used to be. She's more of like the burst Ruby, right? So surprised he's actually not going for the Hunter Strike priority over here, but it's okay. I guess he'll build it later on after the War X. Concentrated energy for Noisy here, and right now Houdini might be in position. Look at that. Okay, gonna go for another skirmish here, and you can see that the Feather Strike being used. They goes back, but a flicker. G Razy with arm offended once he's in there. Curse Soul falls down. Burn for 1 slither of HP. You can see the Phoenix coming in from the back end. Very beautiful escape, but still Houdini is dancing on. He's going in for the infinite pursuit. He got a hand on the G Razy. Slid happen onto Flash. Shut down Houdini. What a trade! This guy's invincible! This guy's sustaining like a god! That is insane, honestly. Like, Houdini was sustaining for so long, the carry was able to come into the fight. The only time he got taken out is when Esmeralda was going for a 1 versus 1 on him. And of course, he cannot exactly win against the Esma. But Esma, what is that positioning? You're solo. You have no vision. Special migration. Gotta get the hand. Monkey Man. I'm surprised he's not playing Sun. Turret secure into the mid side. They open up the map right now. Goes back into the safer zone. De Jonga trying to zone it out properly. Oh, that's a beautiful outplay. He goes into the spatial action. So smooth. Smooth operator. Yeah, I understand why you're saying that. Oh, look at the score dash. 6-7. 6-7. Yes. 67. That's a good score. Oh, okay. Spatial migration. Mavericks combo used as well. We're gonna see the Tormentation coming in. Feather Strike being used as well. The Phoenix connected all the 3 other people. Best crowd control coming out from the Zetian here. Fly. Oh, that's a good one. Monkey Man got the hand. And they're gonna go for another one. Retaliation from the Kaja. It goes back to the safer side. Now they're gonna try to tier 2. I'm gonna take it down there. Houdini coming in. Infernal Pursuit. He does have it. We have like 3 birds in the game right now. Kaja, then of course Farsa, and then the Phoenix, which is the Zetian. And then we have a cow, and then we even have Monkey Man. A crazy amount of animals in the game. But jokes aside, 7-7 score is, it's been equal. And Fly has just been making, you know, D Zebek on the Farsa useless, right? Because every time he opens his ultimate, Zetian does the same and immediately cancels his Feather Airstrike. So because of that, Farsa basically has to only ult after the Zetian has ulted. Definitely. Let's see if they can take the Lord out, Turtle out from their hand. They got it into their hand, but that's a beautiful escape coming out from Noisy. Escape, or am I going to go for the skirmish? They're trying to do so. At the same moment, beautiful dismantle from the side of team Nova. Yeah, so far, I thought that team fight, we might be getting another kill on either of the sides, but both teams take precautions, take discipline, and do not engage much. But towards the top side, Fear of the Phoenix doesn't connect. It connects into 4 on the mid side instead. Right now, Mountain Shocker gets double the vision. I think kind of unnecessary, honestly. They could have fought or like just retreated back. And right now, let's look at the turret game, right? The side of Team Mavericks, they have only 1 turret lost towards the bot side. Meanwhile, Team Nova, they have lost all their tier 1s. Let's take a look into itemization at the same time. Kaja trying to go for a fleeting time right now, almost completed. And I believe Guinevere is going for what? Queen's Wings, I believe. And then Carrie is done with the golden staff as well. So their itemization are looking pretty good. They're trying to get into the third item. On the other side, the YSS done with the Endless Battle. So I guess both teams are definitely looking very much equal, even though Team Mavericks has 2,000 gold lead and they're slowly climbing further. Right now, an invasion towards the purple, but it won't really amount to much, I guess. But wait, Guinevere is on the other side. They can get it.
Let's see, guys. Like it's going into the root, but Hey, okay. Houdini. Blue buff secured. Houdini. Lord's going to be coming up in 20 seconds, and QE Nova, I don't think they're in a good position to really contest it, unless they melt Minotaur and Esmeralda by using, of course, the ultimate from Youngbin or on the Kaja. They might not get the position they really wanted. He does get a fleeting time, so I think they should play aggressive right now. Catch the Esmeralda, but Carrie has a different plan by the looks of it. She's going split. Looks like they're a bit scattered. Kaja is trying to catch Esmeralda there, but he's too far away from his team. On a shocker here for the zone. They somehow find out that nobody is here in the pit. It will be the easy Lord, uncontested one for the side of Team Mavericks, and that's why, like, you were scattered, you were doing something else, and at that perfect moment, Team Maverick, they clinch onto the Lord, finds it for them, but it's not a big trade because it's just the the normal 8-minute slot, which can be disparted easily. You do have the Holy Shield into your side, so yeah, if you try to defend it up properly, you can defend the outer terrace as well with this slot. I think with so much discipline, they do have the resources to go for a defense towards the top side, but the thing is, right, the side of Team Mavericks right now, they have the farm, they have the dive in, they can go with the Minotaur Minion Fury with even the Ruby coming up with the I am offended. They're just in a really good position, but thankfully they do have, the turret blast on the top side. The Holy Shield will definitely defend this Lord. It's the minions they have to watch out for. I don't think Carrie needed to go there. That Lord will be defended. Yeah, that is kind of unnecessary. They could have defended the mid tier, but yeah, it's gonna be gone. I mean, there is a shield, right? Just let the shield pop. You only have 1 more minute until it automatically pops anyways, right? So yeah, they should have defended the tier 2 on the mid side, because they're not going to be able to defend the tier 2 on the bot side. So they will lose 2 turrets instead of just 1. Yeah, I mean, macro-wise, you're kind of having the problem, but it's fine. You do have the inhibitor, suppression comes in, fear the Phoenix of the 5 members, the knock one comes in as well. Suddenly the shift up in, Noisy goes down, triple for consistent, goes in for the Maniac right now. Can he grab it up? Just one it away from the Maniac, he's secured it. Savage about to come in, but look at Houdini, he's strong there. He's dancing up the 4 member, and that will be the Savage. My goodness, 1 converted into 2, 2 into the 3, 3 into the S, and in the end it was a wipeout. A massacre just happened there. Absolute cinematic ending for the side of Team Mavericks here. Consistently, the whole crew into the death burial, I'll say. What a game it was, Ray. Like, I'm a bit speechless. Like, wow, that just came out of left field. Like, what? Suddenly, of course, the teams are playing equal, and suddenly, wow, a Savage. Damn. That just happened out of nowhere, and I'm surprised. I mean, I get it. It's a YSS, but damn. But anyways, QE Nova, I guess giving away the YSS was definitely not a good choice tonight. It's going to be an MVP for none other than, of course, the Mr. Obvious, Mr. Consistent, actually. 704 on that YSS. Pretty wild game. Pretty crazy end to this 4th match of the evening. And a very dominant and a fast one. We've had a lot of long games tonight, and I believe Ash is no stranger to it. Definitely. I mean, in the end, the way he just went in, I mean, I'll say this is not the play style, this is the mindset. Onto the mindset. Because sometimes, even when I play the jungle role, I even fear, like, it's okay, it's triple kill, let's come back. Houdini is so strong to take down, but he knows it can be possible. Goes inside the crown, taking down the Maniac, and then dancing around Houdini, who was literally so strong in this game, and grabbing that Savage. It's a Savage day, of course. With this, guys, we'll be taking a short break at the MOBA Warmup Class Series. Don't go anywhere. The Friday Scrims link are open right now in the websites. You can register your team for the Friday Scrim, as well as subscribe the channel, follow our Instagram handle, join our Discord, share the stream to your friends, like it down there, and comment down whom you're supporting. Me and Ray will be coming back soon for the next game. Don't go anywhere. Stay tuned, guys.
Good evening, ladies and gentlemen, and once again we're back after all with the banger match that just happened between, of course, Team Mavericks and the side of Team QE Nova. We're back once again with another QE team, which is of course Quantum Eclipse Zenith versus Team Lighthawk, a new addition in our weekly scrims on Wednesday, and our registrations for the Friday are open. So if you're of course a team that wants to compete, make sure you register by joining our Discord server at Algambo Esports, powered by kridox. And right now we're heading towards, of course, the match I mentioned, QE Zenith versus Lighthawk. Myself, I'm Ray, once back again with the caster desk, but right now it's no longer Ash TZ, it's going to be Asuya on the casting desk. So hello Asuya, how are you doing? Hello, Ash. Sorry. Hello, Ray. I hear you just mentioned Ash, and I've been doing so many matches with Ash. So now, never mind. Same. Wait, That's why I'm also been doing too much with Ash. That's why I said Ash. Rocks need no but yeah, protection. moving on to from the draft though, and yep, answering your question, I think I am good. I hope you're also good. And I Thank think you. at your place, is it still hot? by these chains. Yeah, it's incredibly hot. Because I did see your live, and you were kind of, very. Anyway, it just showed that it's pretty hot. But moving on to the draft, we have the pretty similar bands coming up. One band kind of missed away, I guess. Yeah. But yep. So God wasn't banned. I'm really surprised. I guess that was a strategy that they wanted to go for, or maybe they just legitimately missed the ban. But regardless of that, they're going to be getting their gourd coming in, and right now Lighthawk, they can respond with, of course, a Fredin and a Yuzhong if they want to. And there we go. They come up with the Fredin and with the Yuzhong, and let's see what QE Zenith will respond. Considering there's a lot of tanks, of course, you have the Claude and the Carry available. I've been waiting for too long. So carry, I think it will be a carry because she just melts towards. Claude can also be an option, but if you give, since there is a gourd, I think carry does have enough space if the stuns do connect. But when it comes to the mages, though, I think Team Lighthawk might opt for Yve, because Yve with Yuzhong as well as the Fredin will literally give them the best of the time. Way too much freedom of movement. But for now, they might go for a jungler, might even grab a roam. What do you think will it be? I think they can definitely pick up, I guess, the Kimi or the Harith, because, Kimi can provide a lot of space in the mid side, and Harith is someone that you can combat against the carries through damage, which can be equalized. And there we go, we come up with the Harith, and QE Zenith, they had prioritized the Lapu Lapu immediately. I guess they were kind of, cautious of the fact that since Lighthawk has the Yuzhong for themselves, they can ban out EXP laners. They have already banned out Paquito, Phobius, so they can honestly ban out the Lapu. So prioritizing the Lapu just makes sense. And right now they will ban out the junglers because guess what? They have a jungler available while QE Zenith does not. We might see a Lancelot or a Suyo ban coming in from the side of Team Lighthawk next. But let's see what Team QE Zenith will ban. It mostly should be the mages. Of course, the ones can bother Gord. Yeah, it's going to be my wifey, Zushin, getting banned away. Well, yep, and I think Eve, or maybe most probably should be an Eve because Eve is way too overpowered in the draft right now. Even Harris will get a lot of space. But as for now, I think Gord too. Gord might be in a very, very tight situation here because there is a Yuzhong, and one good Petri from a Yuzhong can literally separate him from the team fight. So unless and until we do see a very good counterplay coming in from the Lapu Lapu onto the backlines, although even the Zacian is open. So let's see what they go for. The guy being banned away. It makes sense. The burst did increase, the pokes are heavy from him at this point. Yeah, I think Akai right now, after the nerf, he's not exactly a jungler anymore. He's more of a roamer right now, people who play on the basically to suppress heroes like Atlas or Beleric to push them away so they cannot engage. So there we go. We even get the Beleric ban coming in. So Lighthawk, what will they go for into the roam? I guess something standard, or they can even go for the Mathilda, which is open. But will they just go for a hard tank instead, like Minotaur or Hylos or something like that? I think they might go for a Hylos or a Eve because they just pair very well with the Harith. Okay, instead it is a Tigreal.
I don't think so. Tigreal is that good as an Double option horse. here because you have double horse, one centaur though, but the Leo mod coming in along. I think the Leo plus Hylos works, but three of them will be diving in. What will happen to the god as well as the carry, especially when there is a Yuzhong? I'm really skeptical how Team Zenith is going to execute Just kill it the because the Yuzhong. damage dealers might just disappear from the field, right? They will just kill the Yuzhong. There we go. That should be the strategy. If, of course, they want their backline to be safe, because like, guess what? There is nobody that can dive into the backline. I guess technically the Harith, but you get it, right? He exactly cannot go for a flank every time. He's someone that actually dishes the damage front to back. So, and they even have a Valir who's also very frontline heavy right now. He's just gonna dishing out the damage to the Lapu Lapu, the Leomord, and mainly the Hylos, which is of course the one that he's most likely here picked off to counter off. So with Lighthawk draft, looking like they only have one hero to go back into the flank, I believe Kiwi Zenith stands a really good chance to just take out the Yuzhong and then play a front to back composition and just take away the whole side of Lighthawk. But with this, of course, Lighthawk is making their debut tonight at MOBA Warmup Clash Series here at Algambo Esports Week 29. And with this, we jump into the land of dawn. Myself, Ray, and I'm going to be joined by Asya on the casting desk, the play-by-play talent. And right now, let's see what the jungler's rotations are going to be. One goes with the beetle, and the other one will go to the lizard. Pretty optimal rotations, I think. But then again, I think both of them, Leo as well as the Fredrin after the nerf onto the jungle, will be a bit for the slow. I think some help can do them well. But at the same time, in the top lane, Yuzhong will be doing better as compared to the Lapu. Although Lapu needs that level 4 before he can scale off. Meanwhile, in the bot lane, it will be the Harith with the pokes. So I think both the lanes better for Team Lighthawk for now. Yeah, early game, Lighthawk definitely has a chance. But like I mentioned again, if they take away Yuzhong, the backline has nobody to go. Unless the Tigreal pulls off a, keyboy moment, he might be able to pick up the backline. There's no Purify, so in a way, technically, yes, he can pull off the, Mana Miracle Boy. This is keyboy moment. But regardless of that, the score is 0-0. No first blood yet. I was honestly thinking they might play aggressive, but they are kind of playing it a little bit slow for now. And wow, Horse is getting rapid boots. He's going to be running around the map pretty fast. And I think Gord, when paired up with a good tank, he can be really deadly. So Gord really needs to be the priority here. Especially the Fredrin will face a lot of issues because the constant stuns coming in from a God can literally hamper them from taking away the objectives. Meanwhile, the first blood towards the EXP might make sense, and Tigreal just missing up the second skill right in the nick of the time, but there we go, some taunts coming in from the Fredrin. Lapu already level 4, though Dragon into the Land of the Dawn. No Petrify yet, but once again we do see a combo, a knock-up, and Kaizaki though takes down Ripper, and with this Flicker being forced away from the Tigreal, back into the backlines, once again the Lapu also dives in for the Tigreal, but it will be the the Leo which secures the kill. With this complete zone out, the first turtle in the hands of Team Zenith. Kiwi Zenith right now 2-0, and they even get a turtle. And I believe definitely Lighthawk were way too scattered, honestly, to make that team fight. Yuzhong was trying to go back into the... first he was trying to zone away the Leomord, then he suddenly shifted his target to the God, which basically splattered his damage. He was not able to target just one person, and because of that, I think his Petrify combo also kind of missed, because he was not able to take out God completely, because with a full combo, you can definitely take out a God who's not even level 4 yet. So yeah, he kind of messed up the combo there by, I guess, panic targeting. And on the other side, Valir was also zoned away by the Lapu Lapu completely. He was not able to provide any form of zoning by himself either. So they were basically caught in the midst of a lot of chaos, and regardless of that, they lose the first turtle. So already Kiwi Zenith right now in a position with a lot of good amount of lead, and they are looking to, of course, take care of the game pretty much soon if they are able to do so. Tigreal, not even level 4 yet. He's really waiting, and just waiting for that implosion to be coming in any second now. Well, definitely. I think the Tigreal really needs to give some plays here. He's already level 4, waiting with the carry, but carry also knows playing it pretty safe as a carry should.
Well, just like you said, the Yuzhong really needs to lock on to what his priorities are. Maybe taking down the God, not letting him scale is the best thing he can do for now. And going in, he got a bit greedy after Kaizake because he was kind of low. But we do see some flanks coming up into the top lane. Yuzhong will be moving away for now. There is, just Hylos just doing the Hylos thing for now. Fredrin just slowly farming up. Yep. And with all of these things on board, I believe that QE Zenith right now, of course, they're here for... I think Lighthawk, they're slowly farming up. But that's a level 4 Tigreal. He can be melted too fast. He needs to be watch out. He's fighting level 7 heroes. You gotta... Like mid-side, look at that 6-7 level. So yeah, this is going to be a turtle completely unsecured. What's happening to the Tigreal? He's not getting leveled up. I think it's because, a lot of people forget that right now Roam EXP is not just by being the lowest goal. It's by providing vision. And if you're playing a crowd control tank, it's providing crowd control. He's not able to do that, right? So definitely caught in a deficit. Why the Dragon was used for no reason? Bit of questionable decision for Lighthawk. And they even tried to flank the carry. But guess what? They were unsuccessful. For now, definitely the side of Lighthawk, they look like they're confused on what to do, on who to prioritize. Definitely, I can clearly sense the uncertainty which is coming, even from the Tigreal. Like, he's just providing no vision, but he's unsure if he should go in with a flicker, with some aggressions. It's like there is not enough communication, and he knows that people will not be able to follow up on time. Or maybe again, they're just waiting for the Harrod as well as the Willy to scale up. But can you just ignore the squad which will be scaling alongside the carry? Meanwhile, the Dragon just wasting his ult in the top lane. It's kind of a really long cooldown, but with this we might see the red buff though getting secured by the Lapu. Look at him though. Yuzhong just getting dived away. And with this, a lot of poke even coming in from the Willy, but the damage coming in from Leo more. And with this, Hylos goes in with the support. A double kill for Crisis for now as the Mystic Gush comes in. And with this, a turret dive and the heal just saves them up. But Yuzhong, why are you diving in between 5 members? Instant burst down as expected. Damn. Yuzhong wanted to pull a Sanford moment instead, but like, buddy, you don't have enough damage, you don't have enough sustain. And did he have the Petrify? I guess he did, but that's the thing, right? You don't have enough damage to really do anything against 5 members. That too, without anyone. 1v5, you don't have enough farm to do it, my friend. So yeah, definitely a bit of questionable decisions, but damn, that bonk was beautiful to see from the Lapu Lapu. Really precise, but finally they get something towards the bot side. The Harrod will be able to take a turret, I believe, on the bot side. Oh wait, wow, 1 HP turret. They do not even get the turret right now. 6-0. The side of QE Zenith just completely dominant. But right now, Lighthawk, what do you do about it? Tiger looking for an angle to go for an implosion. Yeah, this is the second turtle of the game. Until we see some good set coming in, but Laplabu with the bravest fighter goes in. Harris with the Zaman force into the opposite direction. The Hylos stacking up quite a lot. In that situation, and finally an implosion on 2 members. Rintaro gets taken down, and it's a shutdown. As even the Lapu gets caught off guard. I think pretty good zone though, but they managed to grab the turtle. I would say a turtle for 2 kills. I guess it's a weird trade. You see, QE Zenith are still very much ahead to the point that losing 2 is not gonna, affect them much. But yeah, regardless, this was a positive trade for Lighthawk. They lose the turtle, but they get a shutdown, which is way more valuable than the turtle right now. Especially considering, of course, it was much needed onto the Lapu Lapu, who's dominating quite a bit. But for now, both Gord and Leomord have been completely invincible on 2-0-4, and they should definitely be the next target. Let's take a look into the itemization right now. Of course, we're going to be looking into the God with the trying to build up the Sky Piercer. Carry already done with the 2 of the itemizations he needed. Harrod is following up the same with 5,100 goals, only 400 difference. So Harrod is actually not that far behind, even if his rest of his teammates are kind of struggling. On the mid side, Valir is going to be going with the Glowing One, trying to build up the Ice Queen, just getting the utility as much as possible. And that's pretty much about it. The rest are going for the standard itemization. I like Yuzhong build. He's going for Hunter Strikes, recipe item, the Fury Hammer with Queen's Wings, just getting the sustain instead of going pure damage. This Queen's Wings will also give him a lot of damage when his HP gets 40%. So it's a very win-win scenario. Fradrin,
Of course, he's going for a CDR, but he needs to wait and needs to farm up until he can get enough defense that he can take damage from Crisis and damage from Max. Suguru, right? Yeah, Suguru. For a second, I don't know. I thought it was Sugaru or something. But yes, Suguru over here. You cannot exactly, counter the true damage. So I guess just build against the Lapu, Max, and Crisis. Yep, that's just the way to go. But with this, the next objective will be coming up in 4 seconds. I don't know if Team Lighthawk will also go in, dive in for it, compete for it, because as for now, I do see the level gap, the gold gap also purely in the hands of Team Zenith right now, and Crisis needs to be eliminated first before they actually go in for any team fight or commit. But Leomord going after the dragon uses up the ultimate. Would have used his petrify combo because I think there were his teammates to follow up if he did. So I think a big waste for now. And waste from the XP. Pretty easy lot for the side of Team Zenith. But look at the stuns connecting up. The Tigreal needs to back off for now. Lord Dance going up. Fredrin still there providing some vision along with Ripper. Ripper, you might get ripped off because you really do not have your ultimate for now. But behind the scenes, the Hylos trying to give some damage. The Bravest Fighter goes and connects the stuns on the 3 members. But look at the implosion along with the knockup coming in onto Ripper. Gets ripped off by the damage coming in from the Gord. And with this, the Flicker, once again, the stun connects onto the volley. But hard decision. Manages to move away. And Hylos might get ripped off by the burn which comes in from the volley. With this, 3 members down. And easy lot for the side of Team Zenith. Yeah, I mean, Crisis is right now fully stacked up, man. He has 405 KDA, 20 stacks on the Sky Piercer. And guess what? The Gord Mystic Gush, it just dishes out so much true damage that your frontliners cannot do anything, especially considering they do not have any magic defense to even combat the glowing wand damage coming in from the Gord. And right now, they're just looking in a very bad deficit. That was a good set, though. Really good set. Like Tigreal, Valir, and Yu Zhong, they gave a really good setup right there. But the Gord, free hitting with the Mystic Gush, it just made their whole setup kind of rendered useless. But yeah, regardless, commendable set coming in from the side of Lighthawk. Yeah, definitely, and with this, I think they will be able to defend this Lord. I haven't seen the Harriet scale up pretty much, at this point. Since he does have the Stallions tied, there should be at least a little bit of damage, but I don't see him making, I would say, not much of a utility into those team fights. Tigreal, not, at this point, they should just sit and defend. Maybe wait for the Fredrin to go as the front line and just give the implosions, because I don't think so he is in a position to give any sets for now, because it's just getting disrupted. And once again, the Black Dragon being wasted just to zone away some minions. Yeah, I guess, to be fair, it's Scrim, so maybe Reaper is trying out the Yu Chong, I believe, because he's been, like you said, right, his ultimate has been kind of gone to waste. He's been putting good set, but only on his normal form. He's not able to utilize the dragon form to the maximum potential. Look at that, he's again trying to make a set with just his human form, and he'll just get bursted out. And the Ring of Punishment, I understand implosions though. And with this, the Harriet trying to dish out some damage onto the Zaman Force. But look at the stuns. The damage Maniac which comes in from the carry. Is it? Oh no, it will be Kaitaki. You will be getting that kill. Sadly, no Maniac. With this, the inhibitor will be falling. No one to defend. I think it's the end, Ray. Yeah, most likely, because there's just nobody to take in away to defend. It's gonna be, wow, floating ball from God. What? Sorry, that caught me off guard. But yeah, this was, of course, a very fast-paced game. What is that? Sorry, I just can't help it. That was funny to see. But yeah, 14-2 scored. 12-minute game, very fast actually. I think this was even faster. And wow, Max, his KDA is 6-7. But yeah, jokes aside, 14-2 KDA, a goal lead around, I believe it was sitting at around 10,000 difference. You can see like the difference between Carry and the Harriet, it's around 3,000. Difference between Valier and the Gord, it's around 1,000. Then Junglers, 2,000. Yeah, it becomes 10k eventually. So with that, of course, Ripper, I guess you definitely need to practice a Yu Zhong a little bit more, my friend. You're kind of, using the ultimate a little bit earlier and not in team fights. So definitely looking forward to improvising. And of course, looking out for you registering on Friday Scrims, ladies and gentlemen, because guess what? Our registrations for the Friday Scrims on Algambo Esports
powered by kridox are open right now. Join our Discord server. The link is in here. So make sure. And of course, you'll find, if you're a solo player, you might actually find teammates because we have a lot of players in our server looking to form a team. So you might actually fill the gap. So if you're a new viewer or if you're a new player, you can definitely join a team and start scrimming and start ranking up with them. And of course, we even have scrims open for Honor of Kings. So if you're one of the teams who are looking for that to happen, or if you have like even more teams to scrim against, you can definitely contact us on the Discord server itself. Our moderators are always active, looking out for you. So make sure you join our Discord server. And with that, ladies and gentlemen, we come to the end of the stream for tonight. But of course, we'll be back on Fridays. Asuya, do you have anything to say? Nothing much, just do share, like, share, and subscribe. And of course, our scrims is the best place where you can practice and improve your skills. And hope to see you Absolutely. guys more often. It doesn't really matter how the game goes because we respect that you come up and you practice. With this, we'll Yep. be taking our leave for today. Thank you for joining us. Good night.